Being here is also feels like a miracle, isn't it? And now that we are here, we can recreate that warmth for each one of us. We all can listen to and tell stories. We can hold this space for all the emotions that are visiting us today. And we can make ourselves visible with this smile of ours that and the love that we can't hide. So this is a fancy way of me telling you to put your videos on, make yourself visible so that the tellers can see the listeners. And of course, this magical sound that our hands make when they come together, we won't be able to pass them through these devices. So we'll reinvent a new thing. We can put our hands together and we can rub them together to show that we are feeling the warmth. Whenever we want to show some appreciation and love and warmth, we can do this. So right now, you can pretend that whatever I'm speaking is something very profound, very wise, and you can do this all together. Yes. So you can always show us your smile. You can always give us this warmth. And then there is a chat where you can always write the words you want to express. Of course, I would request you to not type so much during the performances. You can do it after the performances, before the performances. Why don't you give it a try? Why don't you just type in the chat, what is the first thing that comes to your mind when you hear the word stories? What is that first thing? वो पहली चीज क्या है जो आपके मन में आती है जब आप सुनते हैं इस शब्द को कहानी? और तेजी से भागता हुआ हमारा चैट हमें बता रहा है कि आप सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है. We storytellers are boastful creatures, and I'm feeling very proud to announce this, that we have in our audience many faculty members and officials from Center of Excellence in Teachers Education, Tata Institute of Social Sciences, and from the state governments of Telangana and Chhattisgarh. I would like to thank Tata Trust for their generous support, grant, and seat support to the center. And we have among us many educators with loads and loads of wisdom and experience that they bring to this ship. We like to call this our ship of fools. And just to bring a balance to the ship, we have our storytellers, the fools of this world, that remind us to be silly, to play, to love, and to laugh. All the simple and free things. And today, our storytellers have also brought in their family members. So I think it's the first time their families would finally know what do they really do in these sessions. Why do they stick to this laptop on Fridays and Thursdays and giggle for no reason, or make sounds of dogs and cats and babies and old men? And why do they roam around their room and talk to the objects? So I think today they're going to find many of these answers. I welcome you all to this celebration today. When we are born, we come crying into this world. And that is the first story we tell to this world. It's the story of our arrival. And then we start to absorb this world, the hands that hold us, the body that feeds us, and the weird faces that look at us. And we absorb all of it. And then eventually, we use these stories to make sense of this world, this complex world.
So we humans have been telling stories for thousands and thousands of years. But this particular journey that we started, this started about 3 months ago. We started this ship of fools, and there were these 60 people who jumped on our ship, took the risk of going through this experience. And for nights and days, we experienced the immense lands and seas of stories. And now we are finally coming back. We are finally coming to the shore and back to our homes. I would like to invite our first performers for the night, Rachita, Meghali, and Bhavna. They are 3 history teachers, and they are about to tell us the story of homecoming. One, historical fiction, another, a historical reconstruction, and the third one, a tale of personal history. Welcome, storytellers. And you can start whenever you're ready. Nayantara walked down the mud path, her hips sashaying gently, just like the gentle lapping of the water against the river bank. Her skin, the color of honey, browned in the Goan sun. Sometimes singing, sometimes humming to herself. Kajal in her eyes, her hair tied back in a bun. A single string of mogra adorned the bun, the scent of which wafted in the sultry evening air. Dressed in a silken sari, she was laden with ornaments from head to toe, bangles, necklaces, earrings, anklets. And she smiled to herself. Today was her cousin Damu's wedding. She was so excited. A time for celebration after such a long time. This Portuguese Inquisition had sucked the lifeblood out of her. It was, imagine the indignity that a Hindu had to go across the river to get married because the Hindus were not allowed to follow their own rituals in their own land. That you could not get married in your own ancestral home because you lived in this land of the oppressors. Anger flashed across her face. She pursed her lips and gulped some air. None of this today. Today was a day of happy tidings. Today was a day of celebration, and she was going to focus only on that. Ah, there were her friends waiting for her by the river jetty, all eager to go across the river, a place, a free land where they could follow their own rituals. The women approached a lone boatman on the river jetty, and they told him, I'm going across the river. I'm going to Damu's wedding. Please show me the way. I do not know the way. The boatman refused. He said, I'm done for the day. I want to go home. So the women begged him, pleaded with him, and tempted him with their finery. They told him, Ghe, 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 re, saiba. Please take our earrings. But the boatman said, Makanaka go, Makanaka go. They pleaded with him. They told him, take our necklace, bangle, ankles, nose ring, whatever you wish. And each time the boatman said, Makanaka go, I don't want.
Finally, desperate, the women asked him, "What is it that you want?" And the boatman said, "A kiss from each of you lovely damsels will do the trick." Blushing, they agreed. But there was one condition. They would give him that kiss only once they were back from Damu's wedding. The boatman said, "Okay." And they started rowing across the river to Damu's wedding. Oh, how much fun they had at Damu's wedding. So much laughter, so much gaiety, so many people to meet, so many admirers. Drunk on her happiness, Nayantara made her way back to the river jetty after the wedding. She was alone. Her friends had other relatives and friends to meet and visit. But Nayantara, she had to get back home. The boatman started rowing her back across the river. Nayantara sat in the boat, lost in her thoughts, a small smile playing across her lips. It seemed as if she was reliving the moments of the wedding. When suddenly she became aware of a shadow cast on her. She turned around. She saw the boatman was standing so close to her. His eyes were leering at her. "Ai, Saiba, was this man going to come at her? Was he going to force himself on her? Why had she agreed to come back alone? And why had she agreed to his condition? Home, she wanted to go back home, but home was so far away." The boatman lunged at her. She ducked. He faltered. The boat rocked gently. Nayantara looked about her. They were in the middle of the river. She looked into the waters and thought, "Should I jump into the waters?" The boatman lunged again, and Nayantara could feel his calloused hand on her shoulder. He gripped her blouse and tore it. Nayantara stilled her heart, took a deep breath, turned around, and pushed him away. The boatman fell back. The boat rocked. He lost his balance. He hit his head against the edge of the boat and lost consciousness. Tears freely flowed down Nayantara's eyes. She had saved herself. She took the oars and slowly started rowing herself back to the shore, back to safety, back home. "हाँ साईबा पोलतडी वैता, दामूच्या लग्नक वैता, मक साईबा वाट दाखय, मक साईबा वाट करना." क्या बूदो हो बाश, पूछो हो ओ पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो शहर था आलम इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। गर्दी का वक्त 1768। मुगलों का राज अब बंगाल की खाड़ी से सिमटकर कुछ ही राज्यों में बच गया था। अंग्रेजों का हम पर दमन शुरू हो चुका था। फिर भी चावड़ी बाजार की गलियां घुंघरों की आवाज से आबाद थी। मेरा कोठा यानी फरजाना का कोठा मधुर सुतार की संगीत से झूम रहा था। आज मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। आज मैं पहली बार अपनी हुनर का नुमाइश करने वाली हूँ। सुना है कोई सोमरा साहब आने वाले हैं, जर खरीद सिपाही हैं। थारी रही हो ओ हाय, क्या कद है, क्या काठी, क्या नीली नशीली आंखें। लगता है मुझे पहली नजर का प्यार हो चला है। बरसात आई, गर्मी भी आई, पतझड़ आई और बहार भी आकर लौट गई।
फिर वापस आई बरसात। देखते देखते 1 साल गुजर चुका था। सोमरा साहब अब हमारी हवेली को रोज रोशन करते हैं। उन्हें मुझसे सियासती बातें करना अच्छा लगता है। कभी कभी तो शायरी भी सुन लेते हैं। आज आज मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार उन्होंने मेरा हाथ मांग ही लिया। अगले 13 सालों में मैं और मेरे शौहर जंग के मैदान में ही जूझते रहे, लड़ते रहे। जंग के मैदान को ही हमने अपना बिछौना बना लिया था। क्या बयां करूं, क्या क्या नहीं देखा हमने। तरकश से निकली हुई तलवार की झंझनाहट, नए अंग्रेज तूरे दूर बंदूक की गूंजती आवाज, चीरते हुए निकल जाते थे हम दोनों घुड़सवारी करते हुए जंग के मैदान को। आज 3 महीने हो गए मेरे शौहर के इंतकाल को। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वापस चली जाऊं उस कोठे पे नाचने गाने को, या खुद भी जर खरीद सिपाही बन जाऊं। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। धीरे धीरे जो मेरे शौहर के वफादार थे, अब वो मेरे वफादार बन चुके थे। अब मैं बेगम समरू के नाम से जानी जाती थी। मेरी हवेली पे अमीर, उमरा, अंग्रेज सिपाही दस्तक देते थे। दस्तरखान भी होता था, शराब और शबाब की कोई कमी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दस्तरखान में कर्नल डीन की बीवी बोल पड़ी, मैडम, आप देखने में, बोलने में तो मुसलमान है, पर आपका सोचने का तरीका मर्दों की बराबरी कर सकता है। सही तो कहा। मुझे जनानों बातों से क्या लेना देना, मैं तो सियासती बातों में ही दिलचस्पी रखती हूँ। इसीलिए तो मुगल भी मुझे अपने पास रखते हैं। उन्हें याद है वो दौर जब रोहिलाओं ने दिल्ली पे हमला किया था और शाह आलम की आंखों को नोच डाला था। तब मैं और मेरे सिपाहियों ने तो उनकी मदद की थी। उसकी बदौलत ये मेरी हवेली और मेरी जायदाद सरदाना में है। इसीलिए तो कोई भी मुगल मुझे ना नहीं कह सकता। पर इन सब का अब क्या फायदा। जैसे हर शाम सूरज ढलता है, वैसे ही अब मुगलों का मुस्तकबिल भी ढल चुका है, और उनके साथ साथ मेरा भी। वो देखिए, वो सिपाही देख रहे हैं आप, वो इंतजार कर रहा है मेरी आखिरी सांसें लेने का, कि अमा ये कब आखिरी सांस ले और ये अंदर आए और ऐलान करे कि ये मेरी हवेली, मेरी सरदाना में जायदाद अब अंग्रेजों की है। जैसे मेरी रूह एक नया लिबास ढूंढेगी, वैसे ही ये हवेली एक नया हाकिम ढूंढेगी। Good evening. Welcome to a special Women's Day walk in Chandni Chowk. On my left-hand side is the beautiful building housing the SBI. But do you know that it used to be the Haveli of a notorious woman known as Begum Samru? फोन की घंटी बजी। माँ का फोन था। माँ का नाम देखकर खुशी तो हुई, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। माँ फिर वही सवाल पूछती कि मैं घर कब आ रही हूं। अब कैसे समझाती मैं माँ को कि मैं किस उलझन में फंसी हूं। जिस राह पे मैं निकली थी उसे मुझे अकेले ही तय करना था। आखिर सपना भी तो मेरा ही था। जब मैं छोटी थी, दादी के पास एक बहुत प्यारी गुड़िया थी। वो उसे अलमारी में संभाल कर रखती थी। उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। उसके घुंघरालू बाल,
नीली आंखें और नीले रंग का ड्रेस, मुंह में एक पैसिफायर भी था जिसको निकालते ही मीठी मीठी रोने की आवाज आती। आज फिर उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। बेचैनी हो रही है, एक दर्द उठ रहा है जो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। डॉक्टर की कही बात दिमाग ने तो समझ ली थी, पर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरा सपना मुझे झांक झांक कर मुझे देख रहा है, मुझे पुकार रहा है, माँ। माँ का फोन आया। मैंने हिम्मत जुटाई और फोन उठाया। माँ ने खूब डांट लगाई, पर इस समय माँ की वो डांट भी बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि माँ से लिपट जाऊं और उसे अपने दिल का सारा हाल बता दूं, उसके आंचल से अपने आंसू पोंछ लूं और उसकी गोद में सो जाऊं। काश कि मैं बता पाती। शायद शायद मेरे दिल का हाल वही समझ पाती, शायद मेरे सवालों का जवाब भी वही दे पाती। घबराहट होने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर फैसला किया कि मैं मां को सब सच सच बता दूंगी। सब्र का बांध टूटा। मां ने सुन लिया और समझ लिया कि कुछ तो बात जरूर है। मां ने तुरंत घर लौटने को कहा। मैं घर पहुंची, पर दहलीज पार नहीं कर पाई। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन अल्फाज नहीं थे। मैंने सब्र करने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाई। अपने दिल का हाल मां को बता दिया कि मां, मैं मां नहीं बन सकती, मैं तुम जैसी नहीं बन सकती मां। मैंने अपने भाग्य को खूब कोसा और मां ने फिर डांट लगाई। लोगों के सवाल चुपते थे कि हम 2 से 3 कब हो रहे हैं। अब कैसे समझाती हूं उनको। मां ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, सर पे हाथ फेरा और गले लगा लिया, और बस उसी क्षण मैं फिर वही छोटी बच्ची बन गई थी। मैं अपने कमरे में गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ गई थी। एक सन्नाटा सा था, और वहीं पलंग पे मेरी वो गुड़िया। मैंने उसे उठाया और सीने से लगाया और एक डब्बे में डालकर दूर अलमारी में छुपा दिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं इस जिंदगी को पीछे छोड़ाऊंगी। ठीक उस गुड़िया की तरह मैं अपने अरमान भी छुपा लूंगी और आगे बढ़ूंगी। मैंने अपने आप को काम में डुबो लिया, और दिन साल में कब बदल गए कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत थकान सी महसूस होने लगी। कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, कि मैं मां बनने वाली हूं। क्या ये तकदीर का कोई मजाक था या कुदरत का इंसाफ? बहुत सवाल थे, पर कोई जवाब नहीं था। मैंने अनिल को बताना चाहा, लेकिन उसने मेरी आंखों की चमक से सब समझ लिया था। हम डॉक्टर के पास गए। उस दिन मैंने पहली बार उसके दिल की धड़कन सुनी। धक 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 धक। उसके होने का एहसास पहली बार किया। और जब पहली बार उसने करवट बदली, तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ऊपर से नीचे हो गई। इस नन्हे से बच्चे ने मेरे अंदर कब इतना छोटा विशाल घर बना लिया था, कुछ पता ही नहीं चला। और मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी।
मैं अपने हाथ सहलाती और रोज उसे महसूस करती अपने अंदर, रोज उससे ढेरों बातें करती। हम टहलने भी जाते और जब बगीचे में दूसरे बच्चों को देखती तो इस जीवन का एहसास होता। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। सब कहते हैं कि बच्चे के साथ माँ का भी जन्म होता है, और मुझे इसी पल का तो इंतजार था। बहुत सारे बदलाव आए, शारीरिक, मानसिक, भाविक, और मेरे शरीर ने ये सब तैयारी कब कर ली थी कुछ समझ नहीं आया। दिन बीतते गए और सर्दियों का मौसम आया। रिद्धि के आने का समय हो चुका था। उसने फैसला किया कि दिवाली के दिन वो लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर आएगी। हमने प्यार से उसका स्वागत किया। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था। रिद्धि के जन्म के साथ जो रास्ते की मुश्किल थी वो सब मैं भूल गई, और इस तरह रिद्धि हमारे घर आई। Let us take some moments to chew this story slowly. And we can use our hands to show the warmth. And this chat, if you want to write some words of appreciation for the team homecoming. Rachita, Meghali, Bhavna, how does it feel to get the story out of you? How does it feel now? I think there's space for more stories now. How does it feel, Meghali? For a space like this, where I can explore other facets of my life with all of you. So thank you. Bhavna, is there something you would like to say? Thank you so much. Thank you. Thank you for this gift of this wonderful story. And now I want all of us to meet Asavari. I've met so many passionate teachers in my life, but I've never met a teacher who is such a passionate learner. In the past few years, Asavari has taken courses in library education, in early childhood literacy. And in the storytelling session, it was hard to tell whether she's come here to learn or to teach. Every question she asked, every statement she made was so reflective and it was so deep. So before we hear from Asavari, there's a little game I want to play with the audience, if you all are ready. The game is really simple. I give you a situation, and if it fits well with you, you raise your hand. Okay. And then, of course, you can look for your neighbors. You can see who others are raising their hands. So raise your hand if you had a heavy lunch today. None of us ate, really? Okay. Raise your hand if you're losing hair day by day. Raise your hand if you lied in the last 1 week, at least once. You told a lie. Raise your hand if you're telling a lie in this game. Okay. And now, raise your hand if there was at least one day in this month of September when you did not take a bath.
Okay, so these are the people who did not take a bath at least for a day who can relate with Attu. Attu is a little boy, a simple boy who just don't like to take baths. It's just too boring for him. And he says no whenever a question is asked to him. So here is Asavri telling us the tale of Attu and Attu not wanting to take a bath. Welcome, Asavri, and you can start whenever you feel ready. नो, नहीं, नको, ना ना ना। ये सुन के मम्मी एकदम परेशान हो गई थी. ना 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 ऐकून आई अगदी वैतागून गेली होती. अशाच घरामध्ये एक छोटासा मुलगा होता, ज्याचं नाव खरं तर होतं सौरभ, पण घरातले सगळेजण लाडाने त्याला अट्टू म्हणायचे. असा हा अट्टू देखील आपल्या आईला एका गोष्टीसाठी सतत नाही म्हणायचं. कोणती बरं ही गोष्ट होती? चला बघूया. अट्टू, ए अट्टू, चल चल चल, उठ लवकर, वाजले किती, चल लवकर लवकर आटप आणि अंघोळ घे बघू. आई, मला झोपू दे ना अजून. अरे बाप रे, हा मुलगा रोज 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 अंघोळीसाठी नाही नाही म्हणत असतो. मी तुझा आज अजिबात ऐकणार नाहीये. चल पटपट अंघोळीला. आई, नाही करायची आहे मला अंघोळ. कशाला करायची रोज रोज अंघोळ? मला अंघोळ करायची नाही. बघ हा अट्टू, तू याच्या पुढे जोपर्यंत अंघोळी करायला स्वतःहून सांगणार नाही, मी तुला अंघोळीला चल म्हणून म्हणणार नाही. हा, ये किती मज्जा. ते अंग घासणं नाही, साबण लावणं नाही, केस धुणं नाही, कपडे बदलणं नाही, अंघोळ नाही, नो बाथ. इट इज व्हेरी फन. हे सगळं घरातले बाबा आणि आजी ऐकत होते. बाबा अट्टूला म्हणाले, अट्टू बघ हा, जर तू अंघोळ केली नाहीस तर माझ्या कुशीत झोपायला मी तुला घेणार नाही. हा, आजी सुद्धा अट्टूला म्हणाली, अट्टू, आमच्यात अंघोळ न करणाऱ्या घाणेरड्या मुलाला पापी देत नाहीत. हा, अट्टू म्हणाला, जा बाबा, नका घेऊ मला तुमच्या कुशीत झोपायला. आणि आजी, तू ग तू पण नको देऊ मला पापी, पण मी अंघोळ करणार नाही. आणि अट्टू बाहेर आपल्या मित्रांबरोबर खेळायला निघून गेला. त्या दिवशी तो मित्रांबरोबर खूप खेळला, खूप मज्जा केली. अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खेला और पसीने पसीने होकर वो घर पे आया. उस दिन किसी ने भी उसे नहाने के लिए जबरदस्ती नहीं की. असेच 2-3 दिवस गेले, पण अट्टू काही अंघोळ करायला तयार होईना. अट्टूने अंघोळ तर केली नव्हतीच, पण त्याने अंगावरचा शर्ट आणि चड्डी सुद्धा बदललेली नव्हती. आता मात्र अट्टूच्या अंगाला घाण वास यायला लागला होता. तो बाहेर खेळायला गेला की त्याचे मित्रमैत्रिणी तोंड वाकडं करायला लागले, त्याला हसायला लागले होते आणि सगळे त्याला म्हणायला लागले होते, शी अट्टू, तुझ्या अंगाचा खूप घाण वास येतोय, आम्ही तुझ्याशी खेळणार नाही. हा, जा, नका खेळू माझ्याशी. तुम्हाला नाही खेळायचं तर मी नवीन मित्र शोधेन. असं म्हणून अट्टू मैदानामध्ये पळून गेला. मैदानामध्ये गवत चरायला काही बकऱ्या आल्या होत्या. अट्टू त्यांच्या जवळ गेला. बॅ बॅ, ए बकरी ताई, तू माझ्याशी खेळशील ना ग? बॅ, शी अट्टू, तू किती घाणेरडा आहेस, मी नाही बाई तुझ्याशी खेळायची. असं म्हणून बकरी निघून गेली. अट्टू म्हणाला, ठीक आहे, नको खेळूस माझ्याशी, मी त्या भुबू दादाशी खेळेन. तिथून एक कुत्रा येत होता. वू 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 वू. ए भुबू दादा, खेळशील ना रे तू माझ्याशी? वू वू वू. शी अट्टू, शी वू वू, मी आताच अंघोळ केलीये. शी, तू किती घाणेरडा आहेस, मी तुझ्याशी खेळणार नाही. असं म्हणून कुत्रा देखील तिथून निघून गेला. अट्टूने चिमणीला विचारलं, कावळ्याला विचारलं, मांजरीला देखील विचारलं, पण कोणीच त्याच्याशी अंघोळ खेळायला तयार होईना. अट्टूला हे अजबच वाटायला लागलं.
काय झालंय? काय सगळेजण माझ्याशी खेळायला नाही नाही म्हणतायत? जा, मी माझा एकटाच खेळेन. आणि अट्टू एकटाच खेळायला लागला. पण हे काही फार वेळ चालणारं नव्हतं. असा किती तो एकटाच खेळणार होता? मग अट्टूला मात्र कंटाळा यायला लागला. इतक्यात तिथनं कोणीतरी येताना दिसलं अट्टूला. आणि अट्टूला वाटलं, अरे वा, मला आता खेळायला एक नवीन मित्र मिळणार. म्हणून अट्टू वाट पाहायला लागला, कोण येतंय. तुम्हाला काय वाटतं, कोण असेल ते? वहां से एक सुअर आ रहा था, पिग. एक डुक्कर तिथनं येत होतं. जसजसं ते घाणेरडं, चिखलाने माखलेलं, घाणीने बरबटलेलं डुक्कर त्याच्या जवळ यायला लागलं, अट्टूला आता मात्र घाण वाटायला लागली. ते डुक्कर त्याच्या जवळ येत होतं, अट्टू मागे मागे जात होता. डुक्कर त्याच्या जवळ येत होतं, अट्टू मागे मागे जात होता. आणि डुक्कर त्याच्या समोर येऊन उभं राहिल्याबरोबर अट्टूला जरा किळसच वाटली. बहुत गंदा महसूस हुआ उसे. आणि डुक्कर त्याला म्हणायला लागलं, ए अट्टू, चल आपण दोघं खेळायला जाऊया. अट्टू म्हणाला, नको नको, मला नाही तुझ्याशी खेळायचंय. शी, किती घाणेरडा आहेस तू. अरे अट्टू, तू पण घाणेरडा, मी पण घाणेरडा. चल आपण दोघं पण खेळायला जाऊया. अट्टूला आता मात्र त्याच्याशी खेळायचं नव्हतं. अट्टू त्याला म्हणाला, नको नको, तुझी सगळी घाण माझ्या अंगाला लागेल, मला तुझ्याशी खेळायचं नाहीये. आणि अट्टू जीव घेऊन तिथनं पळत सुटला. तो घरी येऊन थांबला. ए आई, लवकर ये, लवकर ये. काय रे अट्टू, काय झालं? अगं आई, आधी तो दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर आधी. आईने दरवाजा बंद करत करत अट्टूला विचारलं, काय रे अट्टू, काय झालं? इतका का घाबरलास तू? अगं आई, मी काय सांगू तुला, ते डुक्कर आहे ना, घाणेरडं डुक्कर, ते माझ्या मागे लागलं होतं. हो का? का बरं? अगं आई, ते डुक्कर मला म्हणत होतं, आपण दोघं खेळूया, आपण दोघं खेळूया. शी. अरे वा, मग बरंच झालं की, तू पण घाणेरडा आणि तो पण घाणेरडा. खेळायचं होतं ना दोघांनी चिखलामध्ये मस्त पैकी. आई, अजून नको ना मानू तू, मला नाही त्या डुकऱ्या बरोबर खेळायचे. मला मला आधी आंघोळ करायची. तू मला छानपैकी गरम पाणी काढून दे बरं आंघोळीला. बघ हा अट्टू, तू समोरून आता पाणी मागतोयस म्हणून मी तुला आंघोळीला पाणी देते, नाहीतर मी काही तुला म्हणत नाही आंघोळ कर म्हणून. आई, असं नको ना करू, चल मला आधी आंघोळ घ्यायची आहे. असं म्हणून आई अट्टू बरोबर आंघोळीला गेला. मस्त साबणाने खसाखस अंग घासलं, केस धुतले, नखातला मळ साफ केला आणि छान पैकी नवीन कपडे घालून अट्टू बाहेर आला. अट्टूला असं बघताच आजी त्याला म्हणाली, अगं बाई, कोण ग हा राजकुमार? असं म्हणून आजीने त्याला जवळ घेतलं आणि त्याचा एक छानसा पापा घेतला. बाबा हे सगळं लांबणं बघतच होते. त्या रात्री बाबांनी अट्टूला एक छानशी गोष्ट सांगितली आणि गोष्ट ऐकता ऐकता अट्टू गाढ झोपी गेला. थँक्यू. बहुत बहुत शुक्रिया सावरी जी इस कहानी के लिए, और हमें उम्मीद है इस कहानी को सुनने के बाद अगले महीने ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब हम में से कुछ लोग जिन्होंने इस महीने गप्पा मारा था वो अगले महीने जरूर रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सावरी जी. अगर आप अपने अनम्यूट कर सके, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ इज दिस एक्सपीरियंस ऑफ दिस इज अ स्टोरी इन राइटिंग एंड यू made it into a storytelling. How was this experience of telling this story? कैसा था इस कहानी को, लिखी हुई कहानी को सुनाने तक का आपका सफर? कुछ आप बोलना चाहे? ये कहानी माधुरी पुरंदरे जी ने लिखी हुई है. बेसिकली ये मराठी कहानी है, अट्टूची आंघोळ, और माधुरी पुरंदरी ने बाल साहित्य में बहुत अच्छा योगदान दिया है. ये कहानी वैसे तो हमने बहुत बार अपने बच्चों को सुनाई थी, लेकिन जब मैंने इस कोर्स के दरमियान बहुत सी बातें समझी, सीखी और उसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की,
तब मैंने इस कहानी में कुछ ऐसे जगह देखी जहाँ पे हम कुछ काम कर सकते हैं, तो उस तरीके से इस कहानी को मैंने मोड़ना चाहा और शायद वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि कुछ लेके उसमें अपना इनपुट्स डाल के अलग सा कुछ क्रिएट करें। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया सावरी जी, थैंक यू सो मच। और आप तसल्ली से जाके अब बैठ के चैट को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके लिए सैकड़ों मैसेजेस आ चुके हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी कहानी कितनी बेहतरीन थी। बहुत बहुत शुक्रिया। Whenever we think of storytelling, often the imagery that comes to our mind comes from the West. Our ideas of what stories are, what stories can be, are often influenced by Western ideas. But if you go to any piece of land in India, you would notice that there are stories that people remember and tell in every community, in every tradition. So I come from Bundelkhand, and Bundelkhand is a very rich tradition of oral stories. You might have heard बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. So this is a land which is known for its oral storytelling. And our next storyteller, Suchitra, who is a passionate library educator, she's bringing us a story from Bundelkhand, a folk tale. And not just a story, she's also bringing along a song for us. Thank you so much, Suchitra. And please take us into the world of your story. यहाँ से बहुत दूर एक औरत को गाने गाने तो बहुत पसंद थे, पर गाना नहीं था। उसकी सखी ने बताया कि गाने तो जब तब बाजार में मिलते हैं। बस फिर क्या देर थी, वो अपने पति के पीछे ही पड़ गई। सुनते हो, अरे सुनते हो, जाके मेरे लिए एक गीत ले आओ बाजार से। बाजार और गीत, नहीं नहीं, पर चलो छोड़ो, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। अरे भाई, कोई गीत होगा? गीत मांग रहे, गीत नहीं भैया, अरे भैया, हमारे तो सारे ही गीत सुबह ही बिक गए, अब नहीं। ऐसा करो, वो जहरी से पूछ लो। गीत और जहरी, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? जाओ बाजार में और देखो। भैया, गीत चाहिए। गीत ना तो मैंने कभी सुना है, ना देखा है, ना जाना है, ना पढ़ा है, ना भावना। गीत नहीं होगा। परेशान, थक कर और मायूस होकर वह चलता गया अपने घर की। तभी रास्ते में उसने एक चूहे को खोदते हुए देखा और सोचा, गीत तो मैं खुद ही बना लूंगा। बस यही देर थी और वह बोल उठा, खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसने एक सांप को रेंगते हुए देखा और उसने अपनी धुन में जोड़ा, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। लो, अब वो खुशी से बढ़ रहा था कि आगे उसने झाड़ियों में से खरगोश को झांकते हुए देखा और फिर दोबारा धुन में जोड़ा, देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। अब गाना पूरा हो ही चला था। उसने कुछ हिरणों को कुलाचे भरते हुए देखा और फिर वह बोल उठा, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। अरे वाह, वो गर्व से पूरा गीत गुनगुनाता हुआ घर की ओर बढ़ा। खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर। अरे
मैं तुम्हारे लिए बाजार का सबसे बेहतरीन गीत लाया हूँ। बीवी बहुत खुश हुई। वह इतनी खुश थी कि उसने उसी वक्त उस गीत को गुनगुनाना शुरू कर दिया। अब ना तो किसी काम में मन लगे, ना वह सो पाए। आधी रात हो चली थी कि आखिरकार उसने चक्की पीसना शुरू किया और साथ साथ गीत का रियाज करती रही कि तभी थोड़ी ही देर में उनके घर शोर घुस आए। वे दीवार में सेंध बना रहे थे और उधर उसने गाया, खो दे खरड़ खरड़। चोर ठिठक गए। जब सब शांत हो गया तो वे आगे बढ़ने लगे और फिर सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। लगता है उसने हमें देख लिया है। और फिर देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। अब तो चोर बेतहाश भागे और जोरों से भागे और उन्होंने निश्चय किया कि अब कभी इस घर में दोबारा चोरी नहीं करेंगे। सुबह हो चली थी कि औरत का पति उठा और उसने देखा कि दीवार में छेद है। उसने फिर पैरों के निशान देखे, फिर पूरे घर को ध्यान से देखा। तुम रात भर क्या कर रही थी? लगता है हमारे घर बिन बुलाए मेहमान आए थे। क्या? मैं तो रात भर उस गीत का रियाज कर रही थी जो आप मेरे लिए लेकर आए थे। अरे वाह, क्या बात है! वो गीत तो सचमुच कमाल का गीत निकला। पता है, उस गीत ने चोरों को भगा दिया। सच्ची आप मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर आए। वो दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने साथ में चाय बनाई, चाय पी और कुछ ही देर में चल दिए फिर दोबारा एक नए गीत की खोज में। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा। थैंक यू। और आप सब अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं हमें चैट पर भेज सकते हैं, जिसे तसल्ली से बैठकर सुचित्रा लंबे वक्त तक, शायद 1 साल तक पढ़ती रहेगी। इतने सारे रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा, कुछ बताना चाहेंगे आप हमें अपने बारे में, अपने काम के बारे में? Before that, I'll show you the book. See? And yeah, तो काम के बारे में तो it's a library. It's a small free community library that me and my friend are together running, and we need a lot of stories in it, a lot of read alouds, a lot of storytelling. Hence, this course has really helped me do a read aloud, a storytelling that I really wanted to do. Yeah, thank you. Do you like to name the book for us? What is the name of the book? किताब का नाम है गीत का कमाल। ये जैसे अंकित ने बताया, ये एक बुंदेलखंडी लोक कथा है और इसको चित्रांकन किया है जितेंद्र ठाकुर ने। Thank you so much. Thank you so much, Suchitra. Thank you, Ankit. Thank you, everyone. Thank you. And now we move on once again for the fourth performance of our evening. Whenever I feel concerned about the situation of education in India, I try to look for examples where things are working, or think people are trying to do things at least. One such hope I get when I see young people, in their early years of working, dedicating time for learning about schools and trying to improve government schools. And two such fantastic, dynamic people are with us, Intikhab and Akashdeep. They are Punjab Youth Leadership Fellows who work with primary schools in Punjab and contributes towards social and emotional well-being of children. So I welcome them both.
and they are telling the story of an insect. एक कीड़े की कहानी है जिसके 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 100 पैर हैं। तो इस कहानी को लेकर आ रहे हैं इंतकाब और आकाश। जब भी आप तैयार हो अपनी कहानी शुरू करें। ये कहानी हिंदी और पंजाबी में है। शुरू करें। आज कनखजूरा बहुत खामोश है, कुछ ज्यादा ही खामोश। वरना आम दिनों में कनखजूरा अपने 100 टांगों को लिए पूरे जंगल में या कभी यहाँ कभी वहां जगह जगह मस्ती करता घूमता। इतने में वहां एक सतरंगी तितली आई। उसने कनखजूरे को यूं दर्द में कराता देख कनखजूरे से पूछा, ओए कनखजूरिया, की होया वा तेनू? सवेर कदों दी हो गया, तू हले इत्थे ही बैठा आ? कनखजूरे ने तितली की आवाज सुन के दर्द में कराते हुए अपने पैरों की तरफ देखा और बोला, मेरे पैर तितलिए, मेरे पैर बड़े ही पीड़ होंडे यार। तितली ने कनखजूरे की दर्द भरी आवाज सुनी तो अपने खुरदुरे पैरों को आपस में मला और झट से कनखजूरे के 100 पैरों पर चढ़ गई और लगी उसके पैर दबाने। 1 2 3 4 पूरे 100, तेरे पूरे 100 पैर आ कनखजूरिया। तेरे केड़े पैर च दर्द होंदी आ? मेरे पूरे 100 पैर विच ही दर्द होंदी आ तितलिए, पैर घुट दे मेरे प्लीज। तितली अपने खुरदुरे पैरों से कनखजूरे के पैर दबाते दबाते कनखजूरे से बोलती है, तेनू रमान ते आंदिया वा ना, वधिया पैर घुटन दे आ ना मैं तेरे। लेकिन कनखजूरा उसके खुरदुरे पैरों से परेशान हो चुका था। तो कनखजूरा तितली से पूछता है, यार तितली तेरे पैर किन्ने खुरदरे आ यार, तू रहन दे यार, तू रहन दे, तेरे पैर बहुत खुरदरे आ यार, तू ते मेरे होर पीड़ करन ला देनी है, तू चल जा यार, तू रहन दे। कनखजूरे की ये बात सुन के तितली अपने रास्ते को उड़ जाती है। तितली और कनखजूरे की यही बात एक तालाब के किनारे पत्थर पर बैठा हुआ हरियल मेंढक सुन रहा था। उन दोनों की ये बात सुन के मेंढक कूदता हुआ कनखजूरे के पास आया और कनखजूरे से बोलता है, किद्दां कनखजूरिया, की होया तेनू? सुनिया मैं तेरे पैर पीड़ होंदे आ, मेरे पैर बहुत चिकने आ। क्यों तेरे पैर घुटदा मैं? मेंढक कनखजूरे से ये बोलते ही अपने चिकने चिकने पैर लिए कनखजूरे के ऊपर कूद गया और कूद कूद के उसकी सारी टांगों को दबाने लगा। ओए 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 बस, तू ते मेरे पैरों ते टप्पी जाना है आ। तेरे तू इदा कातों पुड़कंडिया, तू ते मेरियां 10 भी लत्तां इदा ही तोड़ देनियां। तू रहन दे मेंढका, तू रहन दे। कनखजूरे की ये बात सुन के मेंढक को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन मेंढक ने उसको घूरते हुए देखा और कूद के तालाब की तरफ वापस चला गया। अब कनखजूरा बेचारा अकेला दर्द में मजबूर पड़ा हुआ सोच ही रहा था कि अब क्या करे। इतनी देर में उसे दूर से कहीं भंवरे की गुनगुन आवाज आती है और उसकी तरफ देखता है तो भंवरा कनखजूरे की तरफ ही आ रहा होता है गुनगुन करता हुआ। तो कनखजूरा भंवरे को रोकता है और भंवरे से कहता है, ओ भवरिया सुनी ओए, मेरे पैरां च बड़ी दर्द होन डई, मेरे पैर घुट दे वेला भवरिया। कनखजूरे की ये बात सुन के भंवरा कनखजूरे के पास आके रुक जाता है। पिंग पिंग की होया तेनू कनखजूरिया, तेरे पैर पीड़ होंदे आ, सुनिया मैं, चल कोई नहीं मैं घुट दिना आ। पिंग पिंग। और पिन पिन करता हुआ कनखजूरे के ऊपर भंवरा चढ़ जाता है और उसके पैर दबाना शुरू कर देता है। भवरिया यार तू 2 मिनट बिना पिन पिन कीते नहीं मेरे पैर घुट सकदा। मतलब मेरा ते सिर भी पीड़ होने लग पिया यार तेरी पिन पिन तो। प्लीज यार तू 2 मिनट बिना पिन पिन दे मेरे पैर घुट दे। कनखजूरे की ये बात सुन के भंवरा थोड़ा नाराज हुआ और वो भी अपने रास्ते को हो लिया
अब कनखजूरा फिर से दर्द में मजबूर, अकेला, बिल्कुल खामोश, लेकिन कभी कभी कराहता हुआ फिर से इंतजार करने लगा कि कोई आए और उसके पैर दबाए। इतने में ही दूर से एक चींटियों की कतार नजर आई। चींटियों की कतार क्योंकि दूर थी तो कनखजूरा उन्हें बुला नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी दर्द भरी आवाज निकालते हुए, पूरी जान लगाते हुए चींटियों को आवाज दी। नी भैणो, नी कीड़ियो, मैं आयो 5 मिनट में मेरी गल सुनियो। कनखजूरे की आवाज सुनते ही जो लीडर चींटी थी उसने सारी चींटियों की कतार को ऑर्डर दिया कि चलो कनखजूरे की तरफ, और सारी चींटियों की लंबी कतार कनखजूरे के पैरों के पास आके खड़ी हो गई और पूछा, की होया तेनू कनखजूरिया, की होया तेनू वीरिया, सुनिया तेरे पैर पीड़ होंदे आ, कुट दी आपा तेरे पैर। चींटियों की आवाज सुन के कनखजूरे ने हामी भरी और सारी चींटी धीरे धीरे करके उसके पैरों पे चढ़ गई और लगी अपने छोटे छोटे पैरों से कनखजूरे के पैर दबाने। बस बस कीड़ियो, बस करो, मैनू ते कुदकदारियां लग पिया, बस करो। कनखजूरे के हिलने की वजह से 10-20 चींटियां गिर चुकी थीं, जिसकी वजह से चींटियों को आ गया गुस्सा और चींटियां बोली, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੱਭਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਇਹ। कनखजूरे की ये बात सुन के चींटियों को गुस्सा आया और चींटियां भी अपने रास्ते हो ली। इतनी देर में उन्हें कहीं से ट्वीट 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 की आवाज आई तो कनखजूरे ने ऊपर देखा तो दूर एक पेड़ पे एक बहुत खूबसूरत चिड़िया बैठी थी, अपने लाल लाल बालों को संवारती, बड़ी नखरे में कनखजूरे की तरफ देखती। और कनखजूरे का दर्द देख के थोड़ा उसके दिल में रहम आया तो चिड़िया ने कनखजूरे से पूछा, हेलो कीड़े, की होया तेनू, सुनिया तेरे पैरों च पीड़ हो रही है, लेट मी हेल्प यू। चिड़िया की ये बात सुन के कनखजूरे को थोड़ा बुरा लगा और फिर चिड़िया से बोलता है, मैं कीड़ा नहीं आ, मैं कनखजूरा आ, ते मेरे पैरों च पीड़ होंदी आ, पर तू ते चिड़ी आ, तू ते, मैं ते तेरा शिकार आ, तू मेरे पैर कातों कुटेंगी, मैनू पता तू मैनू खान आई है, तू रहन दे, तू जा इथों। कनखजूरे की ये बात सुन के चिड़िया ने उसे थोड़ा सहारा दिया और बोली, नो नो कीड़े, मैं अनहेल्दी बीमार कीड़ियां नू नहीं खाती, ओके, सो मैं तेनू खाऊंगी नहीं, तो डोंट वरी, मैं तेरी ते हेल्प करन आई है, यू कैन ट्रस्ट मी। देख ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ ਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਝਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੀ ਆ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਰੈਡ ਚੁੰਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਬੈਟਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। कनखजूरा पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन कनखजूरे के पास अब कोई और चारा भी नहीं था, उसके पैरों में इतना दर्द जो हो रहा था। तो कनखजूरे ने चिड़िया से अपने आप को तालाब के किनारे ले जाने की हामी भर दी। तो चिड़िया आई, चिड़िया ने अपनी चोंच में कनखजूरे को दबाया और तालाब के गर्म पानी में आधे डूबे पत्थर पर कनखजूरे को लिटा दिया। अब कनखजूरा अपनी 100 टांगों की सिकाई करने लगा और जब उसका दर्द ठीक हो गया तो कनखजूरा सही सलामत होके जंगल की तरफ वापस लौटा और वापस लौट के उसने उस लाल खूबसूरत चिड़िया को, उन चींटियों की कतार को, उस हरियल मेंढक को, भंवरे को और तितली को, सबको शुक्रिया किया। और सबसे बड़ा शुक्रिया उसने किया उस चिड़िया का जिसने उसे तालाब के किनारे छोड़ा था, क्योंकि कनखजूरा जानता था कि जो लोगों की मदद करते हैं उन लोगों का शुक्रिया करना चाहिए। थैंक यू। मुझे लगता है मुझे बोलने के लिए बहुत वक्त लगेगा क्योंकि मेरा पेट दर्द दे रहा है इस हिंदी और पंजाबी के इस फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन को सुन के।
आकाशदीप इंतखाब, आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे ऑडियंस के वीडियोस को, पर मैं देख रहा था और लोग हंस हंस के गिरे जा रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कहानी बहुत 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 मजेदार थी, और ये आपको भी चैट पे भी जल्दी ही पता चल जाएगा कि लोगों को कितना मजा आया। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर हमको इतना मजा आ रहा है तो बच्चों को कितना मजा आ रहा होगा, क्योंकि हमें अपनी चेयर पे बैठना मुश्किल हो रहा था, हम हिल रहे थे, डुल रहे थे, गिर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे तो अपने किताबें चीर फाड़ के, बस्ते फेंक फाक के हंसते होंगे। आप बताना चाहेंगे जब आप स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो क्या होता है वहां पर, कैसा माहौल होता है, बच्चे कैसे आपकी कहानियों को सुनते हैं? कुछ भी आप बताना चाहे। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। उसके अलावा ये है कि हम कुछ सेशंस कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उसमें स्टोरीज बेसिकली मैं थोड़ा सा मोटिव बता देता हूँ। उसमें हम सोशल इमोशनल लर्निंग के ऊपर कर रहे हैं, तो बच्चों को बेसिकली एक्सप्रेस कैसे कर पाए वो, तो उसका मैं बहुत अच्छा हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। और हमने कुछ, मैं एक दो एग्जांपल्स अगर शेयर करूं कि जब कुछ दिनों पहले हम जब स्टोरी सुना रहे थे, सेम स्टोरी थी, तो जो एक वो विजुअल मेरी नजरों के सामने से नहीं जाता है कि एक छोटी सी बच्ची, उसने एक दुपट्टा जो है वो पहना हुआ था, और जब वो स्टोरी सुनना जब शुरू हुई तो उसने बाकायदा क्लास के बीच में वो लेटी, उसने दुपट्टा ओढ़ा अपने ऊपर और ऐसे टेक लगा के उसने स्टोरी सुननी शुरू की। बहुत ही अच्छा था वो। उसके अलावा एक और बच्चा था, तो वो शुरू में जब हम सेशन शुरू किया हमने, तो बिल्कुल खामोश, यहाँ तक कि उससे अगर हम नाम भी पूछते थे तो अपनी नजरें नीचे करके और अपने थोड़ा माथे को मलता हुआ, उसने थोड़ा बहुत ज्यादा शाय था वो। और सेशन के एंड होते होते, कहानी सुनने के बाद, एक्टिविटीज करने के बाद, उसने हमें हेड स्टैंड करके दिखाया और उसने पुशअप्स करके दिखाए। तो ये मतलब मुझे लगता है कि कहानियों के थ्रू और इन एक्टिविटीज के थ्रू मतलब हमने वो चेंजेस जो है लाइव अपनी आंखों के सामने 1 या 2 घंटे के दौरान देखे। तो मेरे ख्याल में ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज थी हमारे लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। आकाशदीप ने कुछ शेयर किया। मतलब मेन चीज ये आकाशदीप, है आपके कि लिए शर्त यह है कि आपको पंजाबी में बोलना होगा, क्योंकि हम सब आपकी पंजाबी सुनना चाहते हैं एक बार और। हाँ जी जी श्योर। तो मतलब ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਓ, ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਓ। तो मतलब वो चीज सब तो ज्यादा खुशी देती है। सो मतलब बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं कहानी में। हम इमेजिन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब और आकाश, इस तरह की कहानी हमारे बीच लाने की, जिसे बच्चों के साथ घंटों सुनाया जा सकता है। मुझे आप लोगों को देखकर लग रहा था कि अगर आपके पास समय की बंदिश नहीं होती तो एक के बाद एक कीड़े, जानवर, पतंगे सब आते ही रहते और ये कहानी चलती ही रहती। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया इंतखाब और आकाश, हमें ये इस कहानी का अनुभव देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। और आपको अंदाजा नहीं होगा, पर अगर आप अपनी घड़ी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटा बीत चुका है और अब वक्त आ गया है हमारे लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हालांकि कॉमर्शियल ब्रेक नहीं है, लेकिन ये ब्रेक है छोटा सा। ब्रेक के उस पार हम एक मैथमेटिशियन की कहानी सुनने वाले हैं, जिसको लगता है कि वो दुनिया का सबसे महान मैथमेटिशियन है, वैसा उसको ऐसा लगता है। तो हम देखेंगे कहानी की दुनिया में। अगर आपने कभी कहानियां सुनी हो, चीजें बड़ी अजीब होती हैं। आपके हाथ एक जादुई चिराग लग जाता है, पर आप उसे जलाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं जलता। फिर आप दूसरी बार मेहनत करके और कोशिश करते हैं, वो फिर भी नहीं जलता। और तीसरी बार जैसे ही आप उसे फेंकते हैं और वो जल जाता है। तो ये कहानी की दुनिया में 3 नंबर का बड़ा ही मजेदार एक महत्व है। हर चीज जो 3 से जुड़ी है, हर चीज तीसरे बार में होती है। तो हम भी 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक में अगर आपका पेट दुख रहा है तो आप पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। अगर इंतखाब, अगर आप यहां पर रहते हैं तो इंतखाब हो सकता है आपसे कुछ बातचीत करना चाहे या आपके साथ कोई एक्टिविटी करना चाहे। मिलते हैं आप सबसे 3 मिनट के बाद, सीधा 6:10 पर। तब तक आप सब जा भी सकते हैं या यहां रुक भी सकते हैं। मिलते हैं 6:10 पर। इंतखाब। जी जी जी।
तो मतलब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं अभी, थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट उसमें होगा। तो बेसिकली जैसे अभी हमने एक स्टोरी सुनाया है, तो उसमें कुछ जानवरों के कैरेक्टर्स थे। तो अभी हम ऐसे करेंगे कि हम लाइक वो जो स्टोरी है उसके बोन्स, अभी तो पता ही है ना कि बोन्स मतलब वो मेन उसकी जो चीजें हैं वो हम रिपीट करेंगे। तो आपको लाइक क्या करना है कि उस स्टोरी को एक्शंस में बताना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कनखजूरे के 100 पैरों में दर्द था, तो यू नो यू हैव टू जस्ट, आपको वो एक्शन में बताना है कि इसका कैसे दर्द हो रहा है, यू नो उसका वो बिल्कुल ऐसे बेचारा दर्द में बैठा है तो वैसे। और फिर उड़ती हुई चिड़िया आई, तो यू नो थोड़ा एक्शन में दैट ओके उड़ती हुई चिड़िया आ रही है। तो ऐसे हम एक स्टोरी फिर से इसको थोड़ा बोन्स में रिपीट करेंगे, एंड वी वांट लाइक एवरीबॉडी टू लिव द स्टोरी। तो आप सब उसे एक्शंस में कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है कि हम किस तरीके से इमेजिन करते हैं उड़ने को, या कनखजूरे के दर्द, पैरों में दर्द होने को, या फिर एक चिड़िया उसे उठा के लेके जाती है, या भंवरा जो है भिन भिन कर रहा है, भंवरा उड़ता हुआ आ रहा है। तो हम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उन एक्टिविटीज को या अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उन मूवमेंट्स को कर सकते हैं। तो आकाशदीप यहाँ पे एक कोई भी बोन बोलेंगी, और उसमें हम सब के सब जो है कोशिश करेंगे कि उसको इनैक्ट करके देखें एक बार। जी, तो एक कनखजूरा है और उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा हाथों में थोड़ा क्या है, पैरों में भी दर्द हो रहा है, हाथों में भी, पैरों में भी दर्द हो रहा है। वहां से एक सतरंगी तितली आ रही है। हम खड़े भी हो सकते हैं वैसे मेरे ख्याल में अपनी चेयर्स से, अगर हम चाहें तो थोड़ा रिलैक्स कर लें। ये हमने अभी इतने टाइम से सुनी है काफी सारी स्टोरीज, तो मे भी खड़े होके थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं। खड़े जाओ। तितली अपने परों को लहराती हुई आ रही है, पर खोल सकते हैं आप अपने। अब वो तितली कनखजूरे के पैरों को दबा रही है। दबाओ, तितली कैसे दबाएगी? मेरे ख्याल में तो तितली खुरदुरे पैर भी है। हाँ, बहुत आराम आराम से। अब सीन में आ रहा है एक मेंढक उछल उछल के, कुछ ज्यादा ही तेजी से उछल रहा है। अब वो मेंढक कनखजूरे के पैरों पे उछल रहा है, गिर रहा है, इधर उधर उछल रहा है। अब कनखजूरा बेचारा हिल रहा है क्योंकि उसके पैरों पे मेंढक बहुत उछल कूद कर रहा है। अब आ रहा है भंवरा, भिन भिन करता हुआ अपने उस एंटीना के साथ। उसका एंटीना होता है ना शायद उसके सर पे। तो अब सीन में आ रही है चींटियां, बिल्कुल पूरी बॉडी के इस्तेमाल करो। अगर समझिए, अगर वो चींटियां आपकी बॉडी पे चढ़ जाएं तो क्या हो? कनखजूरे की जगह कनखजूरे की जगह भी आप और आपकी बॉडी पे चींटियां चढ़ गई हैं, तो आई मीन मैं तो ये उतारूंगी। और अभी आ गई है वहां पे बहुत ही सुंदर और इतराती हुई चिड़िया, जिसको अपने उस बालों पे, लाल लाल बालों पे बहुत वो उसे है, घमंड है। वो बिल्कुल ऐसे अपने बालों को संवारती हुई आ और रही अपने है। फरों को थोड़ा झाड़ने की कोशिश करती है इस तरीके से वो, और थोड़ा फैलाती है, और फैलाने के बाद चोंच से अपनी गर्दन ऐसे घुमाते हुए स्ट्रेच कर रही है वो। थोड़ा आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी नेक को, काफी देर से आप बैठे हैं। थोड़े हाथों थोड़ा सा को, थोड़ा मेरे ख्याल में अगर हम चाहें तो हाथों को भी हिला सकते हैं। चिड़िया भी खुद को स्ट्रेच कर रही है। सोचिएगा चिड़िया आपकी जगह स्ट्रेच कर रही होती, चिड़िया भी स्ट्रेच कर सकती है वैसे मेरे ख्याल में, इमेजिनेशन में तो कम से कम। और अब चिड़िया को क्योंकि कनखजूरे को लेके जाना है, तो थोड़ा बहुत अपने गर्दन का मसाज भी कर सकती है वो। इमेजिन तो कर ही सकते पैरों हैं। को भी करेगी यार, पैरों को भी करेगी। पैरों को भी कर सकती है, हाँ पैरों को भी कर सकती आप बैठे होंगे आप भी, तो आप अपने पैरों को भी थोड़ा सा हिला सकते हैं। तो ठीक है, अभी कनखजूरे के पैर ठीक हो गए हैं, तो वो खुश है बहुत ज्यादा। तो आप सब भी थोड़ा देर खुश हो जाइए अब। जी, तो थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। और उम्मीद है आपको आपने आपका वो फ्रेशनेस फिर से लौट आई होगी।
Ji. Thank you very much. Thank you. So I welcome back everybody to the next session, next part of this. We are going to hear a story which is about math. And the moment I think of maths, I remember the trauma I faced as a kid. I got good numbers, that was not a problem, but the problem was I did not understand math. And if you have to start rote learning math, you can imagine that I have not understood anything of math. So to this day, I have trauma attached to math, and I speak to the math teachers in my school and I tell them, please, थोड़ी सी math सिखा दो, थोड़ा सा confidence दे दो. पर obviously किसी के पास time नहीं है क्योंकि portion complete करना होता है. Teachers को क्यों पढ़ाएं जब बच्चे हैं. But I hope so कि ऐसा कभी हुआ होता कि जसनीत और सोनल जैसी मेरी मैथ टीचर्स होती, टीचर्स हु ट्राई टू मेक मैथ इंटरेस्टिंग बाय टेलिंग मैथ स्टोरीज. तो आज जसनीत और सोनल यही प्रेजेंट करेंगे एक मैथ स्टोरी अबाउट अ नो इट ऑल मैथमेटिशियन. ओवर टू यू गाइस. मैं हूँ विषम बाहु वक्र वर्गमूलन AKA VQ, इस दुनिया का सबसे महान और ज्ञानी मैथमेटिशियन. आर्यभट्ट, यूलर, यूक्लिड, पाइथागोरस या कोई भी, उनका गणित मेरे गणित के आगे जीरो है, जीरो. अरिथमेटिक हो या अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस, इन पर है मेरी ऐसी पकड़ कि मेरे शिकंजे से कोई ना जाए छूट कर. मैथ्स जिसके नाम से है सारी दुनिया घबराती और बच्चों की रातों की नींद उड़ जाती, उस मैथ्स पर है मेरा ऐसा काबू कि मैथ्स सिखाने में चलेगा सिर्फ मेरा जादू. तो बताओ मेरे नक्शे एक ऐसी जगह जाना हो मैथ्स का कोई भी नामो निशा. 18 degrees north latitude, 79 degrees ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो फिर होकर अपने जेट पर सवार निकल पड़ा VQ ये हाइपोथेसिस के साथ कि वो एक ऐसी जगह जा रहा था ना बच्चे जहां स्कूल जाते थे और ना ही वहां के लोगों का मैथ्स से दूर दूर तक कोई नाता था. पर एक बात तो सच थी दोस्तों, वो जगह थी घने जंगलों के बीच, और जंगल तो इतने घने कि बस्ती ढूंढने के लिए शायद गूगल को भी चक्कर आ जाए. और फिर VQ के जेट ने उसे उतारा जंगल के बीच. My back. I think for the basti I need to take a 55 degrees right turn and मम्मी बचाओ. और फिर भागता भागता VQ पहुंच गया बस्ती में. पर जैसे ही वो बस्ती पहुंचा उसने देखा ऐसा कुछ कि रह गया वो हक्का बक्का. इस जंगल में ऐसे घर कैसे बनाए और किसने सिखाए? ज्योमेट्री, सिमेट्री, मेजरमेंट कच्चे हैं पर मैथ्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो पूरे पक्के हैं. And look at these paintings. A++. Each line and angle is perfect. I have never seen such amazing use of geometrical shapes and patterns in my life. Oh my pie! How could I make an invalid assumption? I better find somebody before I start to doubt my own hypothesis. वहां एक बुढ़िया नजर आ रही है जो कुछ तो बेच रही है. I think a perfect test subject. जाता हूं और उसी को मैथ्स सिखाता हूं क्योंकि लगता नहीं उसे होगा मैथ्स का कुछ भी ज्ञान. और चेहरे को देखकर तो यही अंदाजा लगा सकता हूं कि शायद नफा नुकसान के बारे में उसने जिंदगी में कुछ नहीं सुना होगा.
एक्सक्यूज मी, क्या बेच रही हो तुम यहाँ? चावल। ओ ओके, तो जरा बताओगी, यदि 1 किलो चावल 2 रुपए के हैं तो तुम 2 किलो चावल कितने में दोगी? 1 किलो चावल 2 रुपए में कहाँ मिलता है आजकल? यहाँ पूरे बाजार में 4 रुपए से कम नहीं मिलेगा, समझे? ओके, आई गेट इट। तो फिर ये बताओ कि यदि 1 किलो चावल 4 रुपए के हैं तो फिर तुम 2 किलो कितने में दोगी? तुम्हें नहीं आएगा हिसाब लगाना, मैं सिखा सकता हूं तुम्हें। रुको तनिक, करने दो। गलजी के लिए बाकुड़ी, तो बेगू 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 के लिए होगा तांजी। तांजी मतलब 8 रुपए, ठीक है? अरे वाह माई, क्या बात है, तुम सो हिसाब की बड़ी पक्की निकली। अच्छा, ये आखिरी बार बता दो कि यदि वही चावल अभी 8 रुपए किलो के हैं तो तुम आधा किलो कितने में दोगी? पूरी री री री, दुगनी कीमत का इतना महंगा चावल कौन भला खरीदेगा मुझसे यहाँ? ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी, जाओ यहाँ से। ओह माय पाई, not again. How was this woman able to calculate all this? And on the top of it, she is questioning my questions. 720 out of 1440 words of our stories are done. For the other half, over to Jasneet. चावल वाली का गणित देखकर वी क्यूब को आ गया था चक्कर, और सोचते सोचते वो पहुंच गया एक फेरी पर। फेरी एक मुर्गे वाले की। हेलो, ये 3 मुर्गे खरीदने हैं मुझे एक साथ, कितने में दोगे? तीन नहीं खरीदता कोई यहाँ, एक ही खरीदते हैं, एक मुर्गा, 55 रुपए में। ओह, ये फंसा। नहीं नहीं, मुझे तो 3 ही एक साथ खरीदने हैं। नहीं आता तो मैं बताऊं कैसे हिसाब लगाना है तुम्हें? रुकिए, बाकुड़ी गाली जी, बाकुड़ी गाली जी, बाकुड़ी गाली जी, 150। मल्ल्या मल्ल्या मल्ल्या, माई 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 माई, 15 हुआ। यकूदी मल्ल्या बाकुड़ी गाली जी, 165 हुआ साहब। ओ माय बाय, इसने तो वो हिसाब भी लगा डाला जिसका हिसाब शायद अपनी इसने जिंदगी में ना लगाया होगा। He used expanded form of numbers. I better put my 2 and 2 together and think, what will I do here? Which kind of mathematics I'm going to teach them? They are doing their own mathematics. They are doing their own mathematics. और शाम हो चली थी। इन 2 झटकों से उभरने के लिए थका हारा वी क्यूब चल पड़ता है बस्ती की ओर थोड़ी सोने की जगह मांगने के लिए, और फिर अगली ही सुबह निकल पड़ता है अपने लिए स्टूडेंट्स ढूंढने के लिए, उन्हें मैथ्स जो सिखाना है। ए बच्चों, हे कम हियर, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। स्कूल। अच्छा अच्छा, स्कूल भी है यहाँ? ओह इंटरेस्टिंग। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हूँ लाजी, ये हिमुरा, ये सुमरी है, स्कूल है यहाँ। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम? मैं 8वीं में। आप हमारे नए टीचर हैं क्या?
टीचर हूं तो नहीं, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नया टीचर बन सकता हूँ। मैं तुम्हें गणित में कुछ भी सिखा सकता हूँ, कुछ भी। पर तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर एक ट्रेन है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो ये बताओ कि वो 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाएगी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि कोई ट्रेन या कोई भी इंसान समान गति से कैसे चल सकता है। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा। हिमुरा तुम बताओ, ये नहीं बता पाएगी, सॉरी। हाँ बताओ, ये दो ट्रेन है, दो ट्रेन जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपोजिट दिशा में आ रही हैं, आमने सामने की तरफ आ रही हैं, और हर एक ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। तो ये बताओ कि वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगाएंगी? कितना समय लगाएंगी? वो तो एक दूसरे के सामने आएंगी, टकराएंगी और टूट जाएंगी। ओ माय गॉड। उफ, तुमसे नहीं होगा, दीज चिल्ड्रन आर। अब मैं तुमसे बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ, बहुत आसान है। एक था राघु, राघु, एक राघु था। उसके उसने 4 रुपए किलो के हिसाब से 100 किलो चावल खरीदा। फिर उसने उसमें 5 किलो पत्थर मिला दिए, और फिर उसने दोबारा से उसे 4 किलो रुपए के हिसाब से बेचा। तो बताओ उसे उसमें कितना लाभ हुआ, कितना फायदा हुआ? ये राघु कौन है? हमारे गांव में रहता है क्या? हमें पता चले पत्थर ही क्यों मिलाए चावल में भरा। ना भाई, चावल में पत्थर। हम तो अभी ग्राम मुखिया से उसकी शिकायत करेंगे, उसे गांव से बाहर निकालेंगे। कैसे कोई गांव में पत्थर मिला सकता है? Oh my boy, these children are, why they are going off on the tangent? I need to take 5. Oof, oof. Oh, they are teaching me moral values. They are teaching me moral values. They are questioning my questions. They have no idea of mathematics. Oof. वी क्यूब की तरह आपको भी लग रहा होगा ना कि इन बच्चों को मैथ्स नहीं आता। जब अगले ही दिन वो बच्चों के खेल के मैदान के पास पहुंचता है, तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि वही बच्चे गणित के बहुत से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट का यूज इनफॉर्मल वे से कर रहे थे। देखकर रह गया दंग। बच्चे खेल खेल में ही खेल रहे थे प्रोबेबिलिटी और बेस 12 नंबर के सिस्टम के संग। उसने जब उसके बारे में और सोचा, वो क्या इन्हें पढ़ाने आया था, इनका तो अपना ही है नंबर सिस्टम। उसने तो तय ही कर लिया, अभी तो गुजारूंगा कुछ वक्त और इनके संग, तभी तो जान पाऊंगा इनके गणित करने के नए नए ढंग। कहानी अभी खत्म नहीं है मेरे दोस्तों। अगर जानना चाहते हो क्या हुआ वी क्यूब और मैथ्स के और किस्सों के बारे में, तो इंतजार कीजिए ओह माय पाई के पार्ट 2 का। थैंक यू। Awesome, awesome, really amazing, Sonal and Jasmeet. And you'll see that everyone has sent so many comments, the voice modulation, everyone's appreciated the story. Awesome. So, is this a story that you have taken inspiration from some source or you have written? Please tell us a little bit about the source of the story. Yeah, actually this story is inspired by an ethnographic research study that is done by Dr. Mitani Panda from Jawaharlal Nehru University. It's done on a tribal community that is situated in Odisha. This tribal community is called Sora. And this study basically argues that mathematics, basic learning is embedded in the culture itself. So we actually wanted to promote this idea and wanted to take it forward to the
public, that mathematics is not a cognitive activity. It's actually situated in the culture. So we are actually looking forward to create more such story. And I would really thank on this platform to Ankit and this team. Actually, I have never thought of bringing this kind of work, though I actually wished to, but my ideas has come to the ground only because of Ankit and this team. Thanks a lot, and specifically to Sonal. She has been my lovely partner. Thank you Yes, so much. yes. So I would also like to take this opportunity and thank Jasneet and Ankit. I mean, a research paper. So the most difficult part was converting that research paper into a very, a humorous or a satirical story. But then with all their support and encouragement, I think we managed to do it, right? So now the work has started for Oh My Pie Part 2. We look forward to that too, and for sure I'll be there to listen more about it and learn some more math. Thank you so much, Sonal and Jasneet. Thank you everyone. Thanks. We this workshop was about storytelling for teachers, and one of the exercises that we did was to remind ourselves and write back about the time when we first entered the school and started teaching, our first day as a teacher. And such a journey of evolving as a teacher is something that Padma is going to come and share with us. Padma has also been mentoring a lot of teachers over the past 15 years. She also has been teaching herself. So let's go on this journey of the evolution of a teacher and all the experiences she has had in the process of teaching, and hear from Padma. Thank you so much. Over to you. I always wanted to have a swing in the balcony. I found one finally after so many years, but never found time to sit on it. So one lazy Sunday afternoon, I decided to sit on it with my little black book. This black book of mine is a treasure. It was a gift from my husband when I joined school. It has very warm memories, class photographs, thank you notes, Happy Teacher's Day, and lots of scribbles. So, as I open, this picture was after my induction at school. We had to draw our roles as teachers. To me, teaching was all about coming to school on time and leaving on time. That was very important. And I drew something. I didn't make too much sense of it. But I was supremely confident of myself. In fact, in my interview, I told my ma'am, I'm an engineer. Give me any subject, any class, and I can handle it. And every year I can move up one class, was what I told her. She still hired me. Wonder why she did that. And it went on. 3rd standard, social studies. I was teaching the spellings of 7 continents for 7 days, what seemed like 7 long years to me. What was wrong with these children? They're not in the kindergarten. They are in 3rd standard. What is wrong with them? So I thought, let me ask my mentor. Probably they do something for such situations. So I approach her, and then she tells me, so you started with spellings, right? Can you think of other ways? A map, probably. A map. What will children do with a map? They will simply stare at it. What will they write in their exams? Whenever I went to my mentor with questions, she would ask me 100 questions in return. I was not getting solutions from her. Another workshop, Bloom's, Kolb, constructivism, high-sounding words. I was not making any sense of it. There again I was with my black book, doodling all over. Wish someone really told me what to do in class, how to control the class,
how to finish portions on time. It was not happening. And my class, the minute I enter, they bombard me with questions. Where their questions come from, I don't know. Ma'am, when are we going on our field trip? That's a constant, daily question. And before I finish answering that, ma'am, you know what happened yesterday? And the other day, I was teaching them rights and duties. I wanted to finish that in a day. And then this little one gets up and asks me, ma'am, at what age do we have rights? Do children have rights? And there it goes on and on. And I was not getting any solution. I was not able to hold their attention. But whenever I told ma'am, she would tell me, why don't you begin from their questions? She made it sound so simple. And all her solutions were, go and read this book. Why don't you attend more workshops? Was what I got from her, and it was going on. It was almost a year. And I didn't think I was making progress. I was getting a lot of complaints. My co-teachers were telling me, your children are unruly. And my voice was getting hoarse, and I was going home with a terrible headache. And then again, I go back to my mentor. And this time she tells me, don't lose hope. You will figure it out someday. Read a lot of books. And so saying, she shoved this book into my hands. It was a beautiful book though. She said, you love dogs and cats. This is Wabi Sabi. You love this book. I took the book home and I enjoyed it because I was reading after a very long time. It was a very short book. So I read it. The artwork was very inspiring. So I don't know what pushed me to try this. Was it extreme frustration? Or was it some desire to do something to break free from this? Or I don't know what. I decided I'm going to try a tie and dye activity with my children. Sounds very simple, right? It's just water, paints, that's it. And they're going to do it. But I was very worried. What if they create a mess? What if they create a ruckus? They're already noisy. What if they're all over the corridor? I was super worried. But I said, no, I must try this. I'm not giving up. So I was determined to try. And I was careful. I said, let me have my mentor over. Let her see the mess, was what I thought. So I called her over. And they did it. And what happened? At the end, there were 25 colorful bandhani scarves all over my class. It was the happiest moment. Till day, I don't think I can forget the happiness on their faces. I was a talk of the town in school. I was a heroine. Everyone was complimenting me. I heard you had a great class. I heard your class was very nice. So I walk up to ma'am and I ask her, ma'am, how was my class, ma'am? And she said, you have the answer. You're smiling and your children are happy. And so the other day, when I was walking up to ma'am's room, I heard a conversation which was very familiar. I was signing the register. And I think my mentor was talking to another teacher who was to be hired. And she was telling her, guess what? The teacher was telling my mentor, I can handle any class, any subject. Thank you so much, Padma. Thank you so much. And would you like to tell audience that it's an original story that you have written based on your reflections and that you are the mentor yourself? It was really hard doing this. And I absolutely understand the pains of a teacher when I keep pushing them, try this, try that. Storytelling is not easy.
But how does it feel like 2 days back you felt like this is not something you want to do? And today Actually, you have done it. my moment was yesterday when I shared this story with the teacher who I had modeled it on, and I shared it with my teachers, and many of them could resonate with it so much. And this lady comes up to me and says, "Was that myself?" Is she in the audience right now? She's not there. Okay. But of course, I mean, I could make Yeah. peace with her. So we're still good friends. And Yeah. the beauty of the whole thing is people don't realize how much they have changed Yeah. and what pushes them to change finally. I mean, it's so much within you. I mean, how much ever, you could say this or that. Finally, it's something, I think it's a culmination of a lot of things. And the silent role of that mentor, just watching, observing, letting the person learn on their own in their own time. Thank you for bringing that through this story. Thank you so much, Padma. Thank you so much, Ankit, and thanks all the others. And I hope you will write more stories from your reflections. Yeah. Thank you so much. Thank you. And now Rachita and I would like to invite our next three performers. And they have decades of experience in teaching and mentoring teachers. But let me tell you, in the sessions, they were these little girls. They were like this Kyun Kyun Ladki, if you have read, having hundreds and thousands of questions about every single thing. And they were so curious to learn each and everything. So I'm so happy to have with us Ganga, Nandashri, and Jayashri to tell a story that they have written themselves. Rachita, anything you would like to add? Yes, they have inspired us through this session with their inputs, and they have brought a story and also made us realize during the session that your voice matters. And that is the story they have for us today to remind us that your voice matters. Thank you. Over to you. Good morning, class. I'm going to take your attendance. Amog, Ameya, Bhaskar. Where were you, Bhaskar, yesterday? You were not there in my class. Oh, okay. Sit down. Vidya. Like this. A day passed, then another. A week passed, then another. Several months passed, but Vidya never answered her attendance. This was the time of the year where attendance really mattered. So the principal put the list of defaulters and Vidya's name topped the list. He also called Vidya's parents. Vidya's parents were shocked. Hey, Vidya, if you are not in college, you're so hardworking and prompt. What happened to you, Vidya? What happened to you? But Vidya remained silent. The day she had to meet the principal, she had butterflies in her stomach. With a growing fear in her heart, she entered the principal's room. She sat there with her head held low. And the principal told young number of things, commented a lot, suggested a lot. And that was when somebody entered the room. That was Vidya's class teacher. He was listening to the conversation. Came up to Vidya and said, "Hey Vidya, I've seen you in my class every single day. But why did you cancel the attendance?" Vidya again remained silent, as though she had built that walls of silence around her. Soon, Vidya's class teacher knew what silence meant.
He called Vidya to his staff room. Vidya, as usual, agitated, entered Sir's staff room. Hey, Vidya, come, sit. Take this glass of water. She felt some peace within her. Look, Vidya, speak up. Don't be nervous. We are going to listen to you. I am going to listen to you. Your voice matters, Vidya. Your voice matters. Yes, sir. I'll speak. The next day, she was all prepared to answer her attendance. By the time she answered present, Sir had moved on to the next student. She was not discouraged. The next day, with all her strength, she answered present, sir. With this, she had liberated herself. She felt like a free bird. She had broken those shackles of insecurities, others' opinion, and her own assumptions. Like this, confidence grew. Day after day, month after month, almost a decade passed. After a decade, she entered the same college premises as a lecturer. She stood there at the pedestal, closed her eyes as if to say, thank you to that lecturer who had instilled that confidence in her and made her realize that her voice mattered. She climbed the stairs, saw a well-lit classroom with smiling faces, smiled at them, stood behind the podium. Aditi, Ananya, Vidya. She marked her present and called her to her staff room. Over to the next voice. Summers in Chennai are not exactly pleasant, you know. So one such hot summer afternoon, Shivamma walked very briskly on the streets of Chennai, unmindful that her rubber slippers would give way any moment, and also unmindful that the black tar on the road was beginning to melt. She looked at the knot in her sari, untied it. A crumpled 10-rupee note looked at her. It was month end, you see. But she had to make a quick halt at Murugan's. Yes, one packet bhaji. She quickly collected the packet of bhajis and continued to walk briskly, where her daughter Manju would be waiting for her at home eagerly. And just as she reached home, there was Manju rushing towards her. Ma. Manju, what is this? Ma, why are you pushing me like this, Ma? Manju, I'm all sweaty and sticky, da. Like that Attu pig, no, I'm like that, pa. Okay. So I made 5 kilos of avocado today at Banu Amma's house and so much of vessels to wash, pa. Please, Manju, let me just have my bath. But see what I got you. Yeah. Ma, you got me bhaji? Yes, da. Yes. Okay. So, Manju, how was your day, pa? Tell me. What? Ma, teacher made me project leader, ma. Project, huh? Which one? Amma, you don't know. Helping hands, ma. Helping hands. Oh, okay. Manju, who is your helping hand, pa? Who? What, ma? You don't know. Ah, what? You only know. Who else, ma? And
That Murugan also. He gives me bondas, hot bondas, ma. And sometimes he also repairs my mobile, ma. Ma. Tell me no. Who is your helping hand, ma? Tell me no. Manju, just look behind. See that so many rats in the gutter. See, and who's catching them? That Poocha. Meow, meow. She's screaming there. Can you see that? That Poocha only is helping. Okay. Ma, you're too bad, ma. Just making fun of me, no? What, ma? Manju. Sit down. Sit. I don't know what to tell you, but my biggest helping hand is you, of course, Manju. You. And that Banu Amma. Huh? That Banu Amma? What, ma? She only pays you salary. That's because of all the work you do. What, ma? You also know. Manju, I don't know from where to begin. I don't know how am I going to tell you this. Many years back, when your father was alive, not once, not twice, but many days, she put Banu Amma, put balm on my back. Sometimes ointment on my face, sometimes cream on my hands. Once, she came with me to the police station. Police station, ma? Yes, the police station. She held my hand and told me that day. I still remember her. Shivamma, please speak up, Shivamma, please speak up. If you don't speak today, the beatings will go on. They will go on. Your voice matters, Shivamma. Your voice matters, Shivamma. And that day, I don't know, Manju. I don't know from where I got the courage. I spoke. I spoke, Manju, spoke. Yeah, against your father. For the first time. He was not such a bad man, but Ma. It's okay, Manju. It's okay. Here. Take that last bhaji, ma. How is it? Tasty and nice, ma. That night, as Manju slept, she hugged her mother Shivamma very tight. She clutched her sari pallu and looked at that small window outside. In the moonlight, what did she find? A small knot in her mother's sari. And from the knot, another crumpled 10-rupee note peeped shyly at her. Her brave mother had already planned their next month bhaji treat, and Manju was sure the bhajis were on the way, on the way, on the way. And now, over to the next voice. I met my friend Bhavani in a cafe nearby. It was a usual catching up meet, nothing in particular.
But she asked me a question which made me think very deeply. She asked, "What are the languages of your mind?" Very interesting, I thought, pondered for a while, and shared with her. As a timid child, growing up in a conservative family, all my mind could speak was the language of my eyes at a young age. I could only imitate what I witnessed around me. I remember beholding those story books, which I got very rarely, and the charming marketplace. Just a minute. Am I audible? Sorry. I met my friend Bhavani in a cafe. It was a casual meeting, catching up meeting, nothing in particular. But she asked me a question which made me think very deeply. What are the languages of your mind? She asked. Very interesting, I thought. Pondered for a while and shared with her. As a timid girl growing up in a conservative family, all my mind could speak was the language of my eyes. I could only imitate what I witnessed around me. I remember beholding those story books which I got very rarely, and the charming marketplace which I went past every single day, gaping at the knowledge of looking at those big houses from the edge of the large compound wall longingly. I noticed there was a difference between the way my brother and we girls, sisters were treated. And I also noticed some of my other caste friends could not enter the home. I saw most of the men's physique and voice very stern and purposeful. Some of their stares were not comfortable at all. They're not comfortable. I saw mothers' faces, tired, confused, worried, but yet strong. I beamed at my grandmother's kind gesture, but very moralistic. I still feel avoiding the eyes of that scavenger woman who came to clean our outhouse every single day. There was so much pain in her eyes that I didn't dare to look at them. It was so much pain. But there was another language within me which was wondering at all this in a muffled, soft tone, which I failed to acknowledge because I was gazing at outside so many people, so many things as a young girl. Then I grew up to be a teen. I spoke a lot, I heard a lot. Oh, I promptly heeded everyone's judgments and opinions about me. And I listened to these moral and, sermons. How much did I devour those gossips and stories? Boasting of my capabilities and snapping and scolding others whenever I didn't have answers. I appreciated all the pathbreakers at all the levels. But then there was this
question within me. Always trying to find my identity among the peers. It was a constant question within me. And again, now I could hear my inner language, I told you, which was in soft muffled tone. Now, perhaps a bit clearly and loudly, inquiring all this and trying to find answers to all this, which I conveniently muted, mostly out of my fear. Life happened, job, marriage, family, exceptional experiences, musing moments in life, and plethora of perspectives. No regrets. There came a point in my life when my inner language, which I was talking about, started speaking. I could hear that clearly now, and I started speaking that language. Finally, I felt that I got a seat at the table when my inner language started speaking, and I found my inner voice. As I observe closely, this inner language I'm talking about is not that of morality, dogmas, sermons, good bad conflicts, societal norms. No, none of them. This language is that of sensibility and responsibility. The discovery of this language is quite a thing in my life because it brought in so much awareness within me, helped me to question my inner self, not gazing and bluffing unnecessarily. Quite a journey. Bhavani hugged me tightly and said, Ganga, this inner language is worth exploring. You know why, Ganga? Because your inner voice matters. Your voice matters. It's all it is, end of the day. Thank you. Thank you so much. Thank It takes a lot of courage to face an audience and tell stories that are drawn from our own personal life. It takes a lot of vulnerability, and you all three have shown us the way in doing that by creating this story from scratch and bringing it to this stage. Is there something you would like to say? How your story found its voice through all three of you? Jayashree, Nandashree, Ganga, anything? Jayashree? I think creating this was a process in itself. And I think a lot of unlearning, recalibrating, and it's exactly like, it is very strange that the title of the whole thing happened when Nandashree wrote her piece, Your Voice Matters, we picked it up. And Ganga was very particular that it should be our voice. It should be something which is very personal to us, which mattered to us. I think this gave us an opportunity to look at ourselves as human beings and look at the other when there are pain points and how people have overcome their pain. I think this brought that element. So I think, Ankit, very often our voices we felt we ignored. And here was one course like what you did with us. You listened to each of us patiently. And for the first time, I think all of us will agree with me here that our voices do matter, Ankit, when you're there. And for me, I think the story came a full circle when one of my helpers were recording this session for the backup. And she told, I didn't understand a word of English, but when you narrated the story, I could feel that. I could feel all the emotions. And I kind of understood, Amma. Actually, the thing is, there's somebody who has helped me also,
who told me that my voice mattered. And that's the reason I'm there in your school. So that way I feel that, my story has attained nirvana. So much for you, Ankit, and the whole team and my Yeah. co-students. Ganga? Yeah, thank you so much, Ankit. And yeah, reflection has been part of me, for quite some time now. And in fact, when a couple of them asked me like, how was the workshop, and what did you learn and everything, I in fact told them I exactly cannot tell you what are all the things I learned, but it was thoroughly reflective. All the 12 weeks were thoroughly reflective. One thing I want to, if at all I want to owe you, I want to tell you that, you have nurtured a person within us as a storyteller, because storyteller needs to have a personality. I think you have nurtured us, and it's our responsibility to take care of it. So thank you so much. This is one thing I want to owe it to you. Thank you. Thank you so much. I want to take this opportunity to actually tell the audience that this is a group that has worked for 8 weeks straight, and every week sending me so many videos that were, I mean, entire group, sending me 10 videos, and this group sending me 20. So this has been that dedicated group, and they have surrendered to this process of learning. In the feedbacks, I'm telling them, can we change the story entirely? And they're listening to it, and they're changing the story. And next week, they're coming up with new dimensions of the story. So the story you just heard are very different from the stories we started with 8 weeks ago. And it takes a lot. It takes a lot of humbleness and kindness and generosity and wisdom that these women have shared, to allow me to allow feedback from me, because I think my age is not as much as the number of years they have teaching experience of or mentoring teachers. So I just want to thank all three of you for being that guiding light for this whole of batch, for the whole of journey. Thank you, Jayashree, Nandashree, Ganga. Thank you so much. And now, moving on, just like seasons, there's going to be another one. And now we are inviting Ruchira. And Ruchira is one of the youngest members of our lot. But trust me, she has the soul of a wise old woman. Every time she would speak in the sessions, so much wisdom, so many experiences would come out. And you would realize why when you hear this story, because she has been in so many learning experiences that she has years and years of stories and experiences to share. And here I welcome Ruchira. Rachita, is there I would like something to you'd like add to one say? more thing, that Ruchira is quite outdated. because in this day of emails and WhatsApp messages and voice messages also, Ruchira still prefers to write letters, and she has pen pals all over the world, and she says that she spends her time, free time, writing letters to all of them. And as part of that journey, she's created quite a cute clutter. So let's hear about that cute clutter from Ruchira. I want to recite you a tale, which is not the sole one with me to dwell. From a countless pebbles I want to choose, it's always a puzzle which one to tell. Confused? Simple. It's because I live in a story palace. Yes, you heard it right. I'm a princess of a story palace where walls are not made up of bricks. They are made up of stories. I'm surrounded by a lot of stories. Everything around me has a story. Many letters, life lessons documented in piles of diaries, cherished memories, part of someone's soul to preserve, many new stories to hand over, and
thousands and thousands of letters to read. Yes, this is all I have. To give you a glimpse, I will tell you one story. So one day, the postman came looking for me, and my mother was surprised. Why? And then the postman showed her an envelope. At the back side of that envelope, there was one message. Postman Kaka, please माझ्या रुचिका मावशीला हे पत्र लवकर पाठवा. ही आहे घसरगुंडी. So this letter came to me from a 3-year-old pen friend, Adya. Postman uncle had never seen or received a letter like this. That's why he wanted to see me. This reminds me of one more special letter, which is very different from this one. That particular evening, I reached home after a long day. Mom handed over one parcel to me. And there it was. A piece of handmade jewelry, which I'm wearing right now, and one handwritten letter. Rambaiah had written this letter from Jim Corbett Forest. For the last so many months, few years, he had been staying there and living the serene life in the middle of jungle. I really want to tell you this. Whenever I read Ruskin Bond, I felt he writes it just for me. I remember in one of our conversations, I mentioned about Ruskin Bond's books and my fascination along with this little wish in my bucket list to Rambaiah. Those days, he was living a backpacker's life and he was traveling a lot. Later, when he started staying in the forest, he remembered our conversation. And then he sent this letter to me. And now I have something like a live report from someone who is actually staying there. I had a letter in my hands filled with stories that I had only read in books or seen on National Geographic. That was so overwhelming. And then there is this box. So this is my space dabba. It's all about space. You can see this cute astronaut here. So from my space buddies or some space legends, lots of things are stored in this box. For example, this letter. It was sent by a Venus man of India, Dr. Sanjay Limay, on an April Fool day because he thought it was my real birthday. Believe me, a space legend like him makes arrangements for your birthday and sends you a cake and gifts and letter. It's super feeling. Or this letter, which was sent by one of my friend whom I have never met. She sent me something which is like a horcrux for her and amazed me by believing in me to treasure part of her soul, her memories, her stories. And then there is this coin, there is this letter, or there is this letter which I received yesterday by one of my students. And then there is this letter. Oh my God. There are so many letters and stories in this little palace of mine. And if you really want to hear them, you have to be my guest or write me a letter. Thank you. I am definitely going to write you a letter. I enjoy receiving letters, but things have become too shortcut now. So for sure. So tell me, Ruchira, as you were preparing for this journey, how many letters did you go back and reread? That was very difficult. I mean, yesterday also I went to Ankit and I said, I have 2 more new letters I found and I want to introduce them in the story. And then he said, no, you have to go with the flow. Yeah. This was such a wonderful experience, Rajita, I must tell you. Every week I would sit with Ruchira and she would say, so these are the new letters that have arrived and I really want to work with these. And I said, okay, let's freeze these letters for now. And next week she would come up with, okay, but new letters have arrived and this is the story I want to tell. So she receives just yesterday, day before yesterday, she received 2 more letters that was so damn interesting that I think we need a 3-hour session just to see her letters. And Ruchira, we must put a performance for that. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for sharing this. It really
makes us feel honored to be part of your this cute clutter. And Really. we must tell that Ruchira is also very enthusiastic about space stories. And she's a scientist or a writer or a storyteller, artist, all combined into one. And At Sunrise. co-founder of Makeshift. And yes, and an entrepreneur for sure. So thank you so much, Ruchira. And she is also the one who's taking care of this tech, making this all process very smooth. So you see sometimes us popping up and then popping out. She's the one making it happen. So thank you so much. Thank you so much, Ruchira. Thank you for this opportunity. It was lovely being here. Thank you. And now if you notice again, the clock, it's running really fast and 2 hours have gone by. So it's time for all of us to take that 3 minutes of magical break. It's 7:12 and we'll be back at 7:15 to hear another story. And this time, the story from the perspectives of hands. Let's take 3 minutes of break and come back. Welcome once again. I invite you to come back to your screens and come back to the storytellers because more stories await you. And now I would like to invite Preetu. Preetu is a deeply empathetic person. And you would see that when she'll tell you the story of hands. And Preetu has immense love for nature and learning from communities. And at the moment, she's based in Kalahandi, Odisha. And
She's telling us the stories of the communities she worked with. Over to you, Preetu. Whenever you're ready, you can start. Hi. Today I'd like to take you onto the journey of a couple of hands who have taught me a lot and have made me emotional and allowed me to question at different points. A couple of very special hands and strong hands I have met. But before we go to those hands, I'd like to invite you to look at your own hands. For a moment, just look at your own hands. How do they look? What is the color of your hand? What is the texture of your hand? My hand is wheatish in color and has a few lines. Isn't hand so interesting and intriguing? There are hands which are brown, and there are hands which are black, and there are hands which are white. And there are hands which have so many lines in it, and there are hands which have scars. When you look at your hand, do they remind you of something? My hand does. It reminds me of experiences and emotions I have lived and stories I have experienced. Each hand is so intriguing and it's so interesting. And this reminds me of a very special hand I met on my first trip to Uttarakhand. It was the October winter, and I heard the song of birds and the sound of hammer hitting the stone. I followed that sound and reached a beautiful, mesmerizing scene, a very beautiful, scenic place. But there was a hand. There were those hands lifting heavy hammer and breaking stones. And then picking up those stones and giving it to somebody and then fetching money from those hands. Those hands have gotten old. They had gotten really old, and yet they were strong. They carried strength. They had seen so much and experienced so much. There must have been a time when those hands would have touched their hair, taken care of the children. And now, even though the hands were old, they were still there, working. They'd fetch money and then go and buy groceries from those hands and then fed their family with the hands. And when those hands touched mine, it was so overwhelming. I felt strong and yet weak. And as I tell you about this hand, it reminds me of another. One I met very recently in Kalahandi. These were the hands of a migrant laborer from Kund community in Kalahandi. These hands must have been really sturdy at some point. They helped in plowing in the fields when the father would get tired. They'd help in household chores. They tend to their children. They play with their children. They caress their wives.
And then one fine day, the hand decided to go and explore something new. The hand went to the train and held the tough pillars in the train and reached Kerala, a new city, a new town, to work and to earn money. It was a new dawn, a new dusk, a new experience. Days passed by and the hands were working each day. They were working for 16 hours a day. And one fine day, the hand must have been tired because it worked 16 hours a day. It worked with heavy machines and heavy stones. And one day, when they lifted the stone and kept it on the machine, and the machine came down to cut the stone, and the hand was too tired to pull itself back, and the machine cut the hand. And the hand was gone forever. And last time I saw another hand, the remaining left arm, was when a tiny little girl was sleeping on it, resting on it, dreaming of a better day, a better dawn, a better world, listening to the sounds of the birds in the village, and sleeping on the cot made by her grandmother. This is not just a story, but a lived experience by someone. And there is not just one hand, but many such hands are waiting to tell their stories. And it's from the panchayat called Lanji in Kalahandi, which has one of the highest rates of migration and poverty. Thank you so much, Preetu. Thank you so much for taking all of us in this experience to the perspectives of hands. And maybe we can take some moments to chew this story down before we digest it. Is there something more you want to share, Preetu, about the story or the community you work with? Yeah, actually, so I was part of the course and I met this person. And somebody showed me the picture of this person when he was trying to build a house with his one hand and lifting a water bucket. I don't know, it just came to me that I want to tell this to people. I want people to know about it. And I was speaking to him and I was listening to what he was saying and I do not know how it started, and I just told you, and then you gave me all the push-ups and and everything. So I could finally share. And I remember that day when I was telling you the story, the electricity went off, and you told me that you should be Yeah, this is very interesting. The last time we rehearsed, there was no electricity. And then we imagined what will happen on the graduation day if there is no electricity. Yeah, and that actually happened. That actually happened. And in this break, I was like, oh my God, what do I do? But like, okay, fine, I'm fine. The voice matters. I was like, okay, will I have one candle? And then I opened my Pandora box, my Decorka box, because I shifted to a new location and I found this one candle. I was like, wow. Yeah. Thank you, Preetu, for taking this risk and telling this story. And with this level of empathy and sensitivity, you've actually showcased why stories matter and why it's important to tell them the right way. Thank you so much. Thank you. And all the best for your work. Thank you so much. Thank you. And now we invite our next teller, Lavanya.
And you would find that Lavanya is a very experienced and well-known storyteller. She tells stories in Telugu mostly, and she also teaches storytelling at NIFT Chennai. So we're very proud to have Lavanya among us, and she's telling the story through puppets. So over to Lavanya, whenever you're ready. She's telling us the story of the people's prince, the story of Ram. Lavanya, this is just a reminder that you are still on mute. You might have to unmute yourself and start again. Elelo hailesa, elelo hailesa, elelo hailesa, elelo hailesa, elelo hailesa. It was full moon day. The beautiful temple town of Bhadrachalam is glistening in the moonlight. On the banks of river Godavari is the temple town. And far away, I could see the beautiful temple tower, Sita Ramachandra Swami temple. Ye tiruga nanu daya chuchedavo inavam sotama Rama Natarama Bhava Sagaramidanu Nalinadale Kshanarama. I could hear the strains of Bhadrachala Ramadasa's songs. He was Kancharla Gopanna, who lived in Bhadrachalam in the 17th century. He wrote lovely sankirtans and bhajans of Rama and sang them. I am reminded of Rama's story, Prince Rama, people's prince. Valuke Bangaramayera, Kodandarama, Valuke Bangaramayera. Long, long ago, thousands of years ago, there lived a prince called Rama. He was traveling to the forest because of his father, King Dushyant, who sent him to exile for 14 long years. Rama, along with his wife and loyal and loving brother Lakshman, lived in the forest for many, many years. There, once wanting to avenge his sister Surpanaka's insult, Ravana wanted to teach a lesson to Rama. So he sent Maricha, the Asura, in the form of a beautiful, glistening fawn, for which Sita just fell. She said, "Oh Rama, this is so beautiful. Why don't you please get me that beautiful fawn?" Sita never asked for anything in her life, but this time she wanted it so much. So Sita wanting that and Rama wanting to give her went in search of that fawn. He knew somebody was trying to trick him, but as fate would have it, it was Maricha, the Asura, who was obviously trying to trick Rama, and then he fell down shouting, "Oh, Lakshmana," tricking Lakshmana too.
But Lakshmana didn't believe. Sita said, please go, save your brother. But Lakshman was very, very hesitant. He was hesitant, but still he had to go to keep up the word of his sister-in-law. And there, Sita, who fell for that fawn, was feeling very, very guilty, but she let him go. Making use of this opportunity as per his plan, Ravana came in the guise of an old hermit, asking for alms, and kidnapped Sita and showed her his real self. Sita was shocked, and she was struggling to free herself. But Jatayu, who was watching all this, felt very bad, and he tried to stop Ravana, who was taking away Sita in Pushpak Viman. But Jatayu was mortally wounded, and he was breathing heavily when Rama and Lakshmana came back looking for Sita. And Jatayu, just before breathing his last, told Rama that Sita went in a particular direction. Looking for Sita, as we all know, Rama and Lakshman went to Chitrakoot, and there they met Hanuman. Hanuman took them to his own land of Kishkinda. There they met Sugriva, who became their friend, and Rama helped him by killing his brother Vali, who was against him. Sugriva, as a friend, sent a search party to locate Sita. Everybody was searching everywhere, no one could find. But our Hanuman, who leapt across the ocean into Lanka, looked around everywhere for Sita. No luck. But he finally found Sita sitting under the Ashoka tree, the Ashoka Vanam, surrounded by the women who belonged to the Asura dynasty of Lanka. There, Ravana came once again and asked Sita to take him, to accept him, but Sita wouldn't do so. When Hanuman went back and told Rama about Sita's welfare, after meeting Sita, after meeting her sitting sadly there, he assured her also that Rama would come and take her back. When Rama listened to what Hanuman had told her, he quickly went setting out for Ravana to Lanka. And all the Vanarasena tried their bit and built a lovely bridge across the ocean to help Rama and Lakshmana to reach Lanka. After reaching there, the battle, the big battle between the evil and the good started. They fought and fought and fought. The fierce Ravanasura was very, very difficult to be defeated. In the battle, Lakshman fell unconscious, and Hanuman had to rush to get Sanjeevani. He went up in the sky and he tried to look for Sanjeevani herb, but didn't want to waste his time, so quickly picked up the mountain and came rushing to bring Lakshmana back to consciousness. Rama fought Ravana again fiercely, but in vain. And soon he was presented with a celestial bow. And with the help of that bow and arrow, Rama could kill Ravanasura. And wanting to get back to Ayodhya in a hurry to meet his brothers and mothers, he was worried whether he would reach there in time. But Vibhishan quickly brought the Pushpak Viman after his coronation.
and sent Ram, Lakshman, and Sita and went along with the Vanarasena to witness the grand coronation of Prince Rama, who stood for Dharma and who stood for his word and his father's word and his people. That is the story of Prince of People, Rama, and set in the background of Bhadrachala, the temple town, about 250 kilometers from Hyderabad in Telangana. Thank you so much, Lavanya, for giving us such a long journey in such a short span of time. Thank you so much. And is Thank there you. something about your work that you would like to tell the audience? Oh, yeah, I just love some things like children, stories, and mother language. You know, Telugu, Tamil. For me, I'm lucky to have two mother languages. I am a Telugu, born and brought up in Chennai, erstwhile Madras. So I'm very comfortable with both the languages. And I feel it is very, very important to tell stories and to tell stories in mother tongue so that it helps us to feel rooted. Yeah. And I'm a storyteller, performing storyteller, a professional storyteller, and teacher trainer. And I love stories, and I want to be wherever there are stories. Just like Hanuman, wherever there is Rama, you know, sound of Rama, he is there. So I am there where there are stories and Telugu and teaching. Thank you so much, Lavanya, for Thank this you very story and much. joining And us. I just wanted to tell you that these puppets belong to Andhra Pradesh. It is the shadow puppetry style, the leather puppets of Andhra Pradesh. And I thought I should introduce. That is another passion of mine, Ankit, where I try to introduce our folk artists, our multiple cultures and languages and the beauty in every language. Lavanya, I think you have just gone on mute towards your last words, but I think we understood the essence of it. All right. Thank you so much, Lavanya, for this. And now I invite Aarti. Aarti is bringing a story of a very different flavor. And now we are almost coming towards the end of the evening. We have 3 more very short performances for us. So I invite Aarti, and she's going to tell us the story of a little girl who's really, really angry today for some reason. And when she's angry, she doesn't like anything. So Aarti is going to tell us this story in Marathi, the story called Angry Akku, derived from a picture book from Storyweaver. Aarti, whenever you are ready. You'll have to unmute yourself, Aarti, first. टान 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 टान. शाळा सुटलेली आहे. सगळ्या मुलांनी गोंधळ घातलेला आहे. सगळी मुलं इकडून तिकडून धावत आहेत. का? कारण त्यांना लवकर घरी जायचं आहे. पण अक्कू मात्र एकटी गप्प गप्प आहे. का? क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया है. अक्कूचे आप्पा तिला घरी नेण्यासाठी आले होते. घरी जाता जाता त्यांच्या काही गप्पा सुरू आहेत. अक्कू, ती बघ सूर्यफुलं किती छान आहे, किती टवटवीत आहेत. छे, काय ती सूर्यफुलं? सूर्यफुलं म्हणे, एवढं मोठं फुल कधी असतं का? मला नाही बघायचंय ते. बरं. अगो कुकू, ती बघ माकडं इकडून तिकडून उड्या मारतायत. बघ तरी. छे.
I think Aarti has just experienced a bad network, and I really apologize, but technology, and we all know this. So I hope we'll find another time for her to complete her story. And not all stories are told through words. And now I would like to invite our next two storytellers, Ria and Preeti. And one thing I want to share about them is that they're fantastic storytellers, but they wanted to challenge themselves. And they asked me for a challenge. Ankit, can we do something more? We have done a lot of stories. And so I told them to do a silent story, a mime act. And they took it up as a challenge, and they prepared a mime act and would be showcasing that. So now I invite Ria and Preeti. You can take a few seconds, Preeti and Ria, and start whenever you are ready.
Thank you so much, Ria and Preeti. And I would want you to be back on screen to receive all the love that you're getting in the chat. Thank you so much, Ria. Thank you so much, Preeti. Can you unmute yourself, Ria? Yeah. Tell us how difficult or how different telling a story without words is. Tell us how this process is for you. Thank you, Ankit. As Ankit mentioned earlier, we were actually looking for a challenge, something different to do. And Ankit just came up, why don't you do a mime? I said, what's a mime? To start with, we never knew what's a mime, but with all his guidance and mentoring, we were able to do this. But yes, the journey has been tough, from knowing nothing to actually performing, coming here, choosing the music and the whole attire. Yeah, it was, I'll say, a bit tough, but very nice. Thank you so much for this opportunity. How about Preeti? How do you feel now? It was really a big challenge for me because I am a good orator, but when it comes to act, I find it very difficult. But constant efforts and motivation, no doubt, has made me perform well. And definitely it had been enriching experience, and learning was just awesome and fabulous, no word. I won't say it would be an exaggeration, but the entire session of learning mime was very big challenge for me. And thanks to Ankit sir, to you and Ria, no doubt a very good co-partner. Thank you so much. It takes a lot to stretch your boundaries, and someone who has never done mime before or never heard of it, and within a span of 2-3 weeks to come up with something like this, it's amazing.
And I hope your experience of theater and experience of mime continues after this journey is over as well. Thank you so much, Ria and Preeti, for joining us. Thank you. Thank you. And please do read all the comments that are coming in the chat. And now we are marching towards the last performance of this evening. And I want to invite Kalpita ji and Vidya Devi ji from Fulton, Maharashtra. And they're presenting a story that they wrote themselves. And as you would notice, there's a poetic charm in everything that they have imagined and everything that they're about to tell. It's a story filled with nostalgia and love and longing for a way of life that seems very far away now. I actually remember Kalpita ji from the very first session, and I was asking her what is her one wish, and she shared that when people take the name of birds, I want them to also understand different birds as distinct from each other. So Koel is different and this is different. So I remember that very well, and I've seen her love for nature and love for this strong sense of community that is in her personality, in both of them. And I'm sure you're about to witness this. Thank you so much, Kalpita ji and Vidya Devi ji, for being here. And over to you whenever you are ready. जब भी आप शुरू करना चाहें. कल्पिता जी शायद आपको एक बार अनम्यूट करना होगा, आप म्यूट पर हैं. Okay. कल्पिता जी हम आपको पूरा नहीं देख पा रहे, अभी ठीक है. आज कम से कम 20 साल बाद ये कांचनवाड़ी आ गया हूं. हर वो चीज देखना चाहता हूं मेरे बचपन की, महसूस करना चाहता हूं. हर वो पल फिर से एक बार जीना चाहता हूं. वो परिचित हर निशानी देखना चाहता हूं. लेकिन मिल नहीं रहा है कुछ भी पहचान नहीं पा रहा हूं मैं. बड़ी देर से खड़ा हूं इस हाईवे पर, लेकिन इन आती जाती गाड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं. वहां से कोई आ रहा था, उससे मैंने उस सफेद पगडंडी के बारे में पूछा. वो डोह की तरफ जाने वाली सफेद पगडंडी, और उसके निर्देशित रास्ते पर मैं चल पड़ा. आगे चलता गया और आगे चलता गया, और फिर वही मेरे सपनों की दुनिया का दरवाजा खुल गया. वही पीपल, वही औदुंबर, वही मंदिर और वही डोह. ऐल तटावर पैल तटावर हिरवाळी लेऊन, निळा सावळा झरा वाहतो बेटा बेटातून. शेतमळ्यांची हिरवी गर्दी दाट लागली पुढे, पायवाट पांढरी पसरी आडवी तिडवी पुढे. मैं डोह की तरफ आगे बढ़ा.
वहां की प्रगाढ़ शांतता महसूस करने लगा। ठंडी हवा के झोंके मुझे दुलार रहे थे। बचपन की वो सारे चित्र मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे। वही उसी आम के पेड़ पर हम सुर पारंब्या खेलते थे। और क्या सर ऊपर चढ़ता था और सबसे ऊंची टहनी को पहले छूता। और किशोर, वो तो मछली था, मछली कैसे पानी में तैरता, डोह के पानी में यहां से अंदर घुस जाता और वहां से निकलता। कभी कभी मछलियां पकड़ने में भी बड़ा मजा आता था। मैं कभी कभी अकेले इस डोह में पैर डाले बैठा रहता, अकेला, ध्यानस्थ ऋषि सा, इस औदुंबर जैसा। इसके गूलर, इसके पके फल जब पानी में गिरते तो टुबुक 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 की आवाजें आती। और ये डोह पानी में कालिक मिला सा। इस औदुंबर के विस्तार की छाया के कारण इसके पानी का रंग नीला सा काला दिखाई देता। और शाम के समय अधिक रहस्यमय। और यह औदुंबर पानी में पैर डाले बैठा युगों से अकेला, मेरे मन मस्तिष्क, मेरे जहन के कण कण को व्यापता हुआ। झाकाळुनी जळ गोड काळीमा पसरे लाटांवर, पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर, पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर। मैं पानी में पैर डालकर बैठा हुआ था। यही मेरी अद्भुत स्वप्न रंजन की जगह थी। अचानक पानी में 4 बत्तख दिखाई दिए। वह पानी में तैर रहे थे, लेकिन कुछ अलग सी आवाजें निकाल रहे थे। उनके चारों ओर कांटों वाले पेड़ थे। पानी में अजब सी खलबली थी। 2 मगरमच्छ उन्हें पकड़ने के लिए तिलमिला रही थी, लेकिन कांटों की वजह से उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। अचानक वहां एक होड़ी वाला आया। होड़ी वाला उनकी आवाजें कान देकर सुन रहा था। शायद वह उन बत्तखों की दतीशा भाषा जानता हो। फिर अचानक उस होड़ी की गाड़ी बन गई और वह गाड़ी एकदम से गांव की तरफ चल दी। कुछ पलों बाद वापस वो गाड़ी वहां पर आई। अब उस गाड़ी में कुछ और चीजें भी थी। वह गाड़ी वाला गुड़ की ढेलियां रुई में बांधकर पानी में डाले जा रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और वो मगरमच्छ
वो ढेलिया गपागप खा रही थी। कुछ क्षणों बाद वो दोनों मगरमच्छ अदृश्य हो गए। सारा पानी एकदम से शांत हो गया। वो कांटों वाले पेड़ मुलायम पंखुड़ियों में बदल गए। रंग बिरंगी पंखुड़ियां, नीली, गुलाबी, हरी, पीली। अब उन पंखुड़ियों का रास्ता किनारे तक आ पहुंचा। वो चारों बत्तख उन रास्तों पर किनारे पर आ गए। उनके पीछे वो होड़ी वाला, नहीं नहीं, नाव वाला, नहीं नहीं, गाड़ी वाला, नहीं, होड़ी वाला, वो भी आ गया। अब बत्तखों की उनके साथ दोस्ती हो गई। अब बत्तख उसके कंधे पर चढ़ गए। वह होड़ी वाला पेड़ के ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर से अचानक एक सीढ़ी नीचे आ जाती है। वह सीढ़ी पत्तों से बनी हुई होती है। अब वो बत्तख और होड़ी वाला उस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जा पहुंचते हैं। ऊपर पहुंचते ही बत्तख उड़ने लगते हैं और बत्तखों के साथ वो होड़ी वाला भी उड़ने लगता है। कितना सुंदर दृश्य था। शाम का समय, शाम की सुनहरी धूप उन सब पर छाई हुई थी। वो बड़ी ही शांति से सभी उड़ रहे थे। अब धीरे धीरे उनका रंग लाल हो गया। अब धीरे धीरे उनका रंग नीला, जामुनी और काला हो गया। ठन 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 मंदिर की घंटी बजी और मैं अपने सपनों की दुनिया से जाग गया। कोई लौटा दो मेरे बचपन की वो सुनहरे सपनों वाले दिन। शुक्रिया। कल्पिता जी, विद्या देवी जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस की तरफ देखें और देखें कि कितने सारे हाथ आपके लिए प्यार, आपके लिए मोहब्बत दर्शा रहे हैं। जब आप ये कहानी सुना रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद किसी सपने में डूब गए हैं। और आप दोनों की आवाज जैसे जैसे बहते हुए पानी की और किसी चिड़िया की आवाज जैसी थी। हमें हमें आंख खोलकर देखने का मन नहीं कर रहा था। हमें मन कर रहा था बस हम आंख बंद किए इसे सुनते रहे और ये लोरी की तरह चलता रहे और चलता रहे। इस लंबी सी शाम को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से खत्म किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पिता जी, विद्या देवी जी। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि इतनी खूबसूरत चीज लिखने का और इसे तैयार करने का अनुभव कैसा था। और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते पहले तक दोनों सदस्यों ने इस पूरी चीज को मराठी में लिखा था और वो उसे मराठी में प्रस्तुत कर रहे थे। और अगर आप उनकी मराठी की प्रस्तुति देख ले तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। वो बिल्कुल जितनी खूबसूरत अभी आपने प्रस्तुति देखी वो बिल्कुल उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। पर फिर भी उन्होंने कोशिश की कि ऑडियंस के लिए हिंदी में भी कुछ अंश हो और काफी ज्यादा मेहनत की उन्होंने पूरी चीज को मराठी में लिखने के बाद उसे हिंदी में बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पिता जी, विद्या देवी जी। और जरूर हमें बताइए ये पूरा सफर कैसा था आपके लिए। स्टोरी टेलिंग इसमें एडमिशन लेने से आज तक बहुत ही एक्साइटिंग है ये सारा। जब हम इसका मतलब ये जो फॉर्म्स भर रहे थे उसमें कुछ सवाल थे, उनके जवाब लिख रहे थे, तभी से बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। और आज ये चरम सीमा पर थी। 5 बजे से बिल्कुल एक नई दुनिया में हम बैठे हुए हैं और ये सारी बातें हमारे आसपास चल रही है। बहुत 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 मजा आया।
इस पूरे सफर का। और थैंक यू अंकित, आपके लिए भी। आप इतना सारा एनकरेजमेंट देते हैं। कभी कभी लगता है अरे सच में ऐसा हो रहा है, हम इतनी कहानी ऐसे सच में इतनी अच्छी बता रहे हैं, या ये एनकरेज करते जा रहे हैं हमें और हम कुछ और, हमसे कुछ और करवाना चाहते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी लगता है। तो बड़ा मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस कोर्स में आए और इतने अच्छे सुनहरे पल अब हमें हमेशा याद आते रहेंगे। हम इस ऑनलाइन के द्वारा भी अगर जुड़े हैं, लेकिन ये सारी बातें जब भी अभी मैं जैसे बोल रही तो वैसे भी सारे लोगों को बताऊंगी कि कितना बड़ा सफर था। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पिता जी। विद्या देवी जी। विद्या अनम्यूट। विद्या आपको अनम्यूट करना होगा विद्या देवी जी, आपको नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, हो गया। एक तो बहुत ही सुंदर सफर था ये सारा ही। कल्पिता जी बहुत ही सीनियर है, उनके साथ पूरी कहानी बनाने का मजा मैंने बहुत लिया। बहुत सुंदर, उनके खुद के जो बचपन की सारी कहानियां थी वो भी उभर कर बाहर आई इस कहानी में, वो भी जुड़ गए किससे। और फिर कुछ फैंटेसी डालना था, इसलिए आधा पार्ट हमने पूरा फैंटेसी में डाल दिया। वैसे एक जब पिछली बार मैंने कहानी सुनाई तो एकदम से आपने कहा कि बोन्स पर ध्यान देना, रचना जी पहले कह रही थी, तो क्विकली मैंने 5 शब्द बस कहानी के लिख दिए और वो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि बड़ा काम करता है वो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि यही सही है। और वो कॉन्फिडेंस कि बिना स्क्रिप्ट देखे कहानी कहने का वो बढ़ गया है। बड़ा अच्छा सफर है, बहुत अच्छे साथी जुड़े सभी और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पिता जी। विद्या देवी जी, आपने बहुत खूबसूरती से आज के इस सफर को भी खत्म किया, बहुत ही पोएटिक ढंग से। बहुत बहुत शुक्रिया। रचिता। Yes, so like you said, they have actually given a closure so beautifully. Whatever I say will just be a formality and nothing more. But I'll do the formality. Actually, beyond the formality, I would like to warmly tell all the audience for being so supportive, being so warm towards us, like sending so many messages and giving us complete feedback of how we have done, and that love is something that we are going to take back with us as first time storytellers. It really means a lot to us when the audience appreciates that. So thank you very much, audience. However, I'm sure that there must be more feedback that you would like to give us, and how the program went, how the performances were, good, bad, very good also. So Ankit will type his email ID in the chat and the WhatsApp number. You can send him all that feedback over there, and we will look forward as participants also to listen to that feedback. I would also like to extend a big thank you to TIS for making this program possible. And I'm sure all of us 60 teachers who became a part of this program, we have taken away something. We have enriched our lives with this and the process of teaching. Ankit has been such a warm mentor. Like, I personally have changed some of my techniques of dealing with my students because of the way Ankit used to deal with my not submitting homework on time. So, yes, thank you to TIS and all the people who made that happen, but a big thank you to Ankit. I'm sure I speak on behalf of all the participants when I say that we could not have had a better mentor. We could not have had someone better than Ankit to lead this, because although we are teachers, we love to learn. At the same time, we also have our fears, and especially on the online mode where we have not met each other, seen each other, we don't have the vibe of each other. So it was a lot of getting out of your comfort zone. And
that getting out of the comfort zone was made possible by Ankit and all the thoughtful activities that he would design. And it was also made possible by the other participants, because they created that safe space. They created that safe space where we could break down, we could show our vulnerabilities, and we could trust them with our stories. On that note, thank you very, very much. Thank you for being such a fantastic audience here, everybody, and participants and teachers. Thank you. Thank you so much. And here's a reminder that this is just the day one. And there is day 2 tomorrow. And there are equally good, wonderful stories waiting to be told and amazing storytellers to come before you. कल फिर से हम 5 बजे मिलेंगे और 8 बजे तक हमारी कहानियां चलती रहेंगी. कल की सारी कहानियां हिंदी में है और मुझे उम्मीद है कि आप सब कल फिर जरूर आएंगे. और आज आपने जो कुछ भी अनुभव किया हो, अगर आप उसे हमें लिखकर बताएंगे तो हमारे सारे टीचर्स को बहुत मजा आएगा. क्योंकि जैसे ही इस सेशन से अभी यहाँ पर ऑडियंस जाने वाली है, शायद हम लोग नाचने वाले हैं उन सारी चीजों को याद करते हुए जो हुई है. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, टिस का, इस कोर्स के लिए एक घर देने के लिए. ये कोर्स भटक रहा था अलग अलग जगहों पर, बट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टीचर्स एजुकेशन, प्रोफेसर पद्मा सारंगपाणी ने हमें एक घर दे दिया इस कोर्स के लिए. और वो जगह हमें मिली सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो हम काफी वक्त से करना चाहते थे. और मैं इन 60 टीचरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. इन्होंने पूरी तरह इस प्रोसेस के लिए खुद को सरेंडर कर दिया. जब मैंने उन्हें नाचने के लिए कहा वो नाचे, जब मैंने उन्हें गाने के लिए कहा वो गाए. कभी कुत्ते बिल्ली बन गए, कभी बंदर बन गए, कभी बूढ़े आदमी बन गए. और पूरी तरह इस प्रोसेस के लिए जो जरूरतें थी उन्होंने खुद को उसमें ढाल दिया. ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने हाथों को खोल दिया और वो पीछे गिरने के लिए तैयार है, ये यकीन करते हुए कि कोई है उनके पीछे. और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस था ये देख पाना. 8 हफ्ते पहले जब हम इन कहानियों की बात कर रहे थे तो हम सब कांप रहे थे और पसीने आ रहे थे और अब से 1 हफ्ते पहले भी कुछ कुछ ऐसा ही था. पर आज आप में से हर किसी को कहानी कहते हुए देखना इतना खूबसूरत था. शायद मैं रात भर आपको फोन करके यही बताऊंगा कि कितना खूबसूरत था. तो बहुत बहुत शुक्रिया. And thank you so much, audience, for being here. Thank you so much for all the warmth and the love and the appreciation that you have shown in the chats. This is all we have for tonight. Thank you so much. Have a great night and see you tomorrow with more stories and more storytellers.